All right, let's start. So, anyone just confirm my voice is there or not clearly? Just want to know. Anyone, please just speak and confirm. Can you hear me properly? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir, you're audible. All right, great. So, let's continue. And just a second. Okay, so what is the purpose? Why have we kept this session? For when we launched the intensive batch earlier, there was a lot of demand that some people who missed the bus at that time and they're just feeling now that they thought that they could actually remain very disciplined on their own, and if that is the case, absolutely perfect. Then in that case, you don't need this session, you don't need anything else, you don't need the batch. There are people who have just done the essentials course and they've gotten into top business schools by scoring, and there are people who would have done live courses and they would have faltered. There are people. So I am very clear about one thing, that this is being done because this has been demanded by people, number one. And that is why very clearly, and now if you look at R2 of American schools or European schools or any other place you want to go to, and if you are really at a very low level right now, if you're already there almost, then it's fine. That okay, I am at 655, I need to fine tune, maybe go to 705, 715. That's fine. In 50, 60 days, in 30 days, this is definitely possible. But if you feel that no, you're genuinely struggling, that right now you're not at all at that level, at least R3 of ISB is definitely possible. Why I'm saying that is because in the past, people with 3, 4, 5 weeks of preparation have turned things around and they were not super intelligent. We always feel that no, these people who are actually able to go to business schools and so on, they were intelligent. If they were intelligent in the first attempt, they would have really smashed the exam, etc., etc. So it's a very clear mandate why we're having this session, not only for the batch but also to get alignment on our own studies. What can we do better? Because when we asked you to fill the Google form, so many startling realizations I had, so many of them. And that is like, okay, these are the struggles people have even now. I mean, the struggles at this stage for some people are that I'm still struggling with very basic math, very basic. I freeze on percentage type questions even now, which is not an expected reality. I can't expect that reality shouldn't be the case, but it has been. So, what exactly can we do so that we salvage 1 year? Please don't forget the cost of 1 year is too high. I'll give an example. You are at X level salary, you can go to 3X after B school. This 2x you lose for 1 year, and it is not just money, it's the kind of work that you're doing. You may not be enjoying the work. You may have something that, okay, I am drained right now. I want to just learn something in a business school and do something more meaningful, more meaty roles. So all of that can be the case, and if it is an American school, obviously this salary can even become 5 to 10 to 100 times for some people. It has happened, and that's what you've already known from me. I'm not trying to really say this, just that why should we succumb or surrender to the reality that now it will be in 2027, 2076 में तो मेरा बी स्कूल नहीं हो रहा. अगर आप वहां से आते हो तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, तो बहुत ही सिंपल बात है, फिर तो कोई फायदा ही नहीं. बट क्या ये जेन्युइनली टर्न अराउंड हो सकता है 1 मंथ में, 2 मंथ्स में? एंड यू हैव टाइम. इफ इट इज जैन, यू डेफिनेटली हैव टाइम. So can this turn around? And I'll be honest if it can. I'll be honest if it cannot. We'll discuss both possibilities. So let's get cracking. Whatever I want to discuss, it will all be in this. So also we'll be joined by someone who's recently joined ISB. When I say the word recently, because that person joined the other batch, which is the YL batch. We anyway have so many people going to ISB everywhere, we can't even keep the count. Many times we come to know that this person went to ISB when maybe 6 months later or 1 year later, because that person did the GMAT with us, did not do the admissions, or even if that person did the admissions counseling, that person never reported. It has happened so many times. So I am really talking about the summary of all the challenges. Let's really go through them. Really, just 1 second, guys. All right, so let's see. First thing is, people say that इतने भी सिंसियर लोग हैं, इतने सिंसियर, उसके बाद भी 3 दिन के बाद चौथा दिन पढ़ाई नहीं कर पाते. मन में पूरी सिंसियरिटी है कि नहीं करना है, फोड़ देना, इस साल हो जाएगा सब कुछ, लेकिन
4 days of consistency non-stop is a very rare sight. And then we see people studying 18 to 19 hours a day and getting a 745 and getting any business school they want. Very average. They say they were so average, but some people are able to do this, some people are not able to do this. So clearly this has been a big challenge. Everybody says that this is a big challenge. I mean, and I'm not denouncing you, I'm not saying कि ये गलत है. I'm not at all saying that no, why can't you be consistent. If you can't be, then there should be a solution from my side rather than crib about it. So this has been there. This is what my answer to that is. The batch that we have, and I'll talk about the batch first. So some people genuinely need this kind of clarity. This batch is not a forced batch ki sabko join karna chahiye. It is not something like that. I never do that. No invitation from my side, just to solve a problem that you're facing. If this is your problem, then this is a solution. The reason for that is, आप ये सोच के देखो कि 40 lakh is, or 45 lakhs if you look at GST etc., around that is what we pay to ISB if you don't get scholarship, and not everybody does. Think about a loan after that. Sorry, just a sec. Think about a loan, and the repayment of that loan will be somewhere about 50 to 60 lakhs, depending on in how much time you pay it back. All this can be saved if you have either 30 more marks or probably 150 more marks, depending on what you are scoring right now. Somebody might be at 685, easily able to get to ISB or any business school that person wants to, but no scholarship below 715 is the reality we've seen. Somebody might be at, let's say 535, and that person genuinely wants to get to 750. So it could be 30 more or 150 more, but this can happen. First of all, it has happened for very average people. Number one. Number two, if it can happen, and it can happen in 1 month for some people, why is it that we can't devote that kind of month to our prep and really see that, no, why should I waste 1 year? Basic logic is this. So this batch obviously will force discipline. This is the basic purpose. Why do we even have something like this? Absolutely daily work, fixed schedule, 3 to 4 times a day we'll be talking, alternate days you can talk to your mentors, everything. So there's no chance. Another thing, this has always been the case that some people say that I am not able to close. Like I'm not able to close. Ki meri accuracy 60% pe aake stuck ho gayi, I can't go above. I can't focus on the pace. Everything I can solve. The moment the clock is ticking, I can't solve. So final push is that only. That is how you have. That's why every institute, whatever it is for CAT or it is for G, will have so much test series because chahiye. But test series ka bhi fayda tab when you're improving. If you're not improving at all, this will be very frustrating. So can there be some sort of a support? That is what people have asked. That the last mile, the last sprint guidance to cross 715. And obviously this is designed as last prep because हमने पहले ही बोल दिया हम इसमें बेसिक्स नहीं पढ़ाने वाले. बहुत क्लियर हूं मैं इस चीज के लिए. नो बेसिक्स आर टॉट. इट डजंट मीन इफ यू आर बेसिक्स आर वीक डोंट ज्वाइन दिस बैच. सिंपल. ये कोई फाइनेंशियल रीजन से नहीं ज्वाइन किया. इनफैक्ट दिस इज नॉट समथिंग दैट वाज आवर प्लान आल्सो. देयर आर पीपल आई नो, मैं देख सकता हूं, so many people are attending who have been with us for 2-3 years. They know that I've never launched an ISB R3 batch. Or एक reason और है कि ISB's director, when I actually met online, I'm sure उसकी recording आपने देखी, he says that even in R3 people are getting 100% scholarship, and he's not talking about ISB as an anomaly कि ISB तो exception है, ऐसा नहीं है. He's talking about all business schools because ISB cannot take that decision in isolation. So every business school, in fact, I looked up my own data. We had a student who got 100% scholarship in Wharton by applying on 27th of March R3 and 100% scholarship. बहुत clearly. So this is a genuine pause. Another thing, time management की full time job है, ये है. मेरा आंसर इसमें ये है कि आपको अगर क्रिब करना है तो लाइफ लॉन्ग आप प्रिप करते रहोगे कि तो जॉब है तो क्यों जीमैट करना है, या तो आप सोचो कि नहीं करना है, फिर 5 साल तक भी रहेगा जॉब. तो ये जो चीज है, एंड आई नो सम ऑफ द स्टफ दैट आई से विल यू विल फाइंड वेरी बैड टू हियर, बट देन हाउ इज इट दैट सम पीपल आर एबल टू मैनेज विद जॉब आल्सो? And what is the solution to that? So we will have laser focused approach in this. Every single day you are doing something, you are meeting your faculty for 3 days for extra support.
You are doing 1 day long practice, absolutely long hours, and 3 days you will be actually taken through, so that there is push to finish. कोई भी टॉपिक, हमारी सबकी आदत, और मुझे पता है क्योंकि मैं भी स्टूडेंट ही था एक टाइम पर, एक छोटा सा जो लास्ट माइल होता है छोड़ देते हैं। हाँ, सीआर में आई कैन डू 60-70%, आई डिड नॉट क्लोज इट एट 90%। हाँ, मैंने प्रोबेबिलिटी 3 बार पढ़ तो लिया, पर अभी भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। दैट्स नॉट हाउ वी शुड प्रिपेयर, बट दैट्स हाउ वी डू प्रिपेयर। तो वो चीज की क्लोजर, एवरी सिंगल थिंग डिपेंड तो इसी पे करेगा ना यार, क्लोजर इसी पे डिपेंड, देन यू आर रेडी फॉर द एग्जाम। No, no, inequalities, algebra still trouble me. No two-part analysis. This verbal sort of question always goes wrong. No, this bold-faced question in CR. No, this inference in RC, whatever it is. क्लोजर नहीं दिया इसका मतलब आपने, क्योंकि बाकी लोग लाते हैं ना स्कोर। समवेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो पॉइंट बीइंग एट 60% एक्यूरेसी। इससे अच्छा तो जीमैट की तैयारी शुरू ही नहीं करते। You shouldn't have started. What's the point? You are at 500, then what's the point? 500. So if you're at 60%, take it to 90+% or get out of the game. Is it possible? Absolutely yes, because there is so much proof around it. So much proof. आप कर सकते हैं। एंड अगेन कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, मैं क्या बोलूं इस चीज के लिए कि हाँ पहले मेरा कैट खराब हो गया, मैंने जीआरई दिया, वो नहीं हो पाया, ये आई हैव फियर ऑफ एग्जाम एंजाइटी। मैं आपके माइंड पे तो इतने कम टाइम में काम कर ही नहीं सकता। दिस बैच इज नॉट अ थिंग दैट विल वर्क ऑन योर माइंड सेट। इट इज बेसिक स्ट्रेटेजी। माइंड तो क्लियर करके लाना पड़ेगा। अगर आपको बी स्कूल जाना, यू वॉन्ट सर्वाइव अ डे एट आईएसबी, फॉरगेट हार्वर्ड वगैरह तो भूल ही जाओ। आप किसी तरीके से कर भी लोगे। अगर यही प्रॉब्लम है, बिकॉज इट इज सो रिगरस। 5 बजे सुबह उठते हैं लोग, या 5 बजे तक सोते ही नहीं है, और रात को 11-12 बजे तक चलता रहता है बी स्कूल नॉन स्टॉप। एंड इट इज सो हाइपर कंपेटिटिव। आप अगर बी स्कूल जा रहे हो तो ये सोच के जाना कि हर किसी ने जीमैट दिया होगा और क्लियर किया होगा, हर किसी ने एसेस लिखे होंगे, हर किसी ने इंटरव्यू क्लियर किया होगा, हर किसी की प्रोफाइल जॉब सब रहा ही होगा। That means people who are going are absolute achievers. किसी भी स्कूल में, even ISB, I'm not saying ISB is like so gung ho about profile, but still, I mean, decently intelligent people go there and they want to do their best. कोई 1 साल अपनी जॉब छोड़ के जा रहा है और कोई 40-50 लाख रुपए दे रहा है, तो वो सीरियस तो होगा कि मैं इस 1 साल का जूस निकाल लूं पूरा। अगर वो सीरियसनेस उसमें है तो कितना कंपेटिटिव एनवायरनमेंट होगा। एंड इफ वी हैव दिस प्रॉब्लम इटसेल्फ कि नहीं यार 2 दिन काम होता है, तीसरे दिन नहीं, देन यू आर नॉट कट आउट फॉर दिस वर्ल्ड। करना ही नहीं चाहिए फिर तो। मतलब मेरा पॉइंट है, या तो आप लास्ट लेवल तक क्लोज करो या खत्म करो कि नहीं करना। And I'm not saying you are a quitter or something. Fine, you quit something, but you took a wise decision. You quit then. If you're attending this session, it tells me you still want to do the GMAT very, very thoroughly. You want to go to a B school. That is why. अदरवाइज आप क्यों अपना संडे सैटरडे खराब करोगे? फालतू का एक सेशन हो रहा है तो कोई जरूरत नहीं है। एंड दिस बिकॉज वी हैव वेरी रेगुलर इंटरक्शंस इन दिस बैच। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कई लोगों को लगता है, कई लोगों को ये रहता है कि टीचर से बात करने का कोई जरूरत नहीं, मुझे मटेरियल दे दो, प्लान दे दो, वीडियोस दे दो, टेस्ट सीरीज दे दो, पोर्टल दे दो, मैं खुद कर लूँ। Most people are like that, the ones who succeed, but some people who need that extra push, that hand holding, that regular interaction. दोनों तरह के लोग होते हैं, कोई अच्छा या बुरा, सही गलत कुछ नहीं है इसमें। I have seen people who took the course, essentials only, just took the course, and in between 2, 3, 4 months, no interaction, they directly report the score. And there are students who send 10 emails a day. दोनों तरह, इसमें गलत सही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ जो 10 ईमेल भेजता है वो रॉन्ग नहीं है। इट्स दैट वी हैव बोथ काइंड्स ऑफ एक्सपेक्टेशन। सम पीपल से मटेरियल दे दो, वीडियोस दे दो, टेस्ट सीरीज दे दो, पोर्टल दे दो, स्ट्रक्चर दे दो, प्लान दे दो, बस मैं खुद कर। there are people who write 10 emails a day. That means they just feel कि कुछ तो support चाहिए, and they don't do it mostly for the questions. They just want to talk, and nothing wrong about either of them. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक तरह के लोग अच्छे हैं एक तरह, but definitely if that is the requirement people have, then there is a solution, because we will have very regular interaction with teachers. वर्बल और डीआई में बहुत स्ट्रगल होता है लोगों को कि नहीं मेरा टाइम ठीक नहीं आता है, मेरी एक्यूरेसी एक लिमिट के बियॉन्ड। हमेशा ये ध्यान रखो, अगर किसी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का 100% स्कोर आ सकता है, आई एम नॉट सेइंग 100%, मतलब अगर 23 क्वेश्चंस हैं तो ऑल 23 करेक्ट अगर आ सकता है,
इसका मतलब कॉन्करेबल है। हमारी गलती बता रहा हूं, आई एम जस्ट शेयरिंग द मिस्टेक दैट वी, हमें ना लास्ट स्टेज तक जाने के पहले 10 चीजों में प्रॉब्लम है कि हाँ थोड़ा पढ़ लिया, फिर ब्रेक आ गया, फिर वापस से 1 महीने तक तो ऑब्वियसली यू कांट पिक योरसेल्फ अप। इफ यू हैव अ ब्रेक फॉरगेट इट, जीमाट यू कांट पिक अप द नेक्स्ट वीकेंड, ओके यू जस्ट कांट, दिस इज नॉट एन एग्जाम, यू पिक योरसेल्फ अप अगेन। फिर बहुत सीरियस हो गए, 1 महीना बहुत पढ़ाई किया, फिर कुछ ब्रेक आ गया, एंड वी रीच समवेयर अबाउट 60%। इसके बाद जो गैप होता है कि हाँ 90+% वो कुछ लोग क्रैक करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, दे जस्ट डोंट क्रैक दिस, एंड दे जस्ट गिव अप कि इससे ज्यादा हो ही नहीं रहा, प्लेटो आ गया प्रिपरेशन। There has to be a reason for that also. How to break that plateau in preparation? There has to be a way out, because people from Hindi medium, Punjabi medium, people who spoke only Telugu as their own language, they couldn't speak any word in English. They have scored 100% in verbal. That means what? ये difference है, आपकी English उनसे ज्यादा अच्छी है, लेकिन आप आगे बढ़ नहीं, क्योंकि माइंड में एक लॉक हो जाता है कि इससे ज्यादा मेरा नहीं आ रहा, बिकॉज you have 60% accuracy today, tomorrow you want to see 70%. Some things just don't happen like that, they take a lot of time, थोड़ा सा यहाँ पे एक बैरियर आता ही आता है, हम यहाँ पे क्विट कर देते हैं। फिर से अपने आप को पिकअप करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, the most difficult task is picking yourself up again when you quit. It's better, that's why we say consistency। हर टॉपर का इंटरव्यू देख लो जिसका स्कोर आए, एक भी अगर ऐसा स्टूडेंट हो कि नहीं इसने कंसिस्टेंसी वर्ड यूज नहीं किया अपने, वी डोंट टेल देम कि पहले से बता के रखा कि कंसिस्टेंसी जरूर बोल देना, that's not how we talk at all। Obviously they share their own journey, their own, and you will agree that your biggest problem can be that only। And please remember, थोड़े दिनों का प्लेटो जरूर आता है। If you've heard me before, you heard all these things before, all of these. I've discussed this in Know the World. I've discussed this all the time. Some plateaus cannot be broken through the next day itself. We have an expectation, if I don't improve so soon, I'll quit। Another thing is distraction है हमारी लाइफ में, ये करना है वो करना है, छूट जाता है। आज पार्टी प्लान हो गई, आज फ्रेंड्स ने कर लिया, आज फैमिली ने कर लिया, आई एम लिविंग अवे फ्रॉम माई सिटी, आई ट्रैवल होम, आई मीन ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। कि हाँ यूट्यूब खोला तो पता ही नहीं चला, 4 घंटे निकल गए फालतू के शॉर्ट्स देखते देखते, इंस्टा खोला तो पता ही नहीं। दीज आर आर चैलेंजेस है, ये सब चैलेंजेस सबके साथ हैं, नो मैटर हाउ मच आई से। सम पीपल आफ्टर वॉचिंग द फर्स्ट सेशन ऑफ नो द वर्ल्ड, दे अनइंस्टॉल इंस्टाग्राम, में बड़ा जोश आ जाता, 15 मिनट बाद दे रीइंस्टॉल इट, 15 मिनट नहीं रहा जाता कुछ लोगों से इंस्टाग्राम के बाद। फिर हम उम्मीद करते हैं कि हम हार्वर्ड चले जाएं, कि हम वॉटन चले जाएं। आप ये सब ट्रम्प वाली न्यूज का टेंशन मत करो, ये सब बिल्कुल बकवास है। सम पीपल आर लाइक यूएस यूएस, नो, पीपल हैव गॉन, पीपल हैव ग्रेजुएटेड इन 2025, दे हैव स्मैश्ड everything। Nothing has happened to Harvard University about reservation you can't take, nothing has actually happened। he just makes statements so that he can scare people, कुछ लोगों के तरीका होता है। Nothing has happened to H1B thing, nothing has happened, it's not। Another thing, by the time you graduate, if you're going to an American university, Trump will be out of power, a lot of decisions will be revoked in the next 6 months only, क्योंकि हर चीज जो होता है executive order by president, it cannot be the final decision। You should know how politics works also, because this is important। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मींस अकेले प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कुछ भी निकाल सकता है, दैट डजंट मीन 60 डेज में द कांग्रेस, द सेनेट एंड द सुप्रीम कोर्ट हैव टू रैटिफाई। रैटिफाई मतलब उसको बोलना पड़ता है कि ये सही है। सुप्रीम कोर्ट नेवर रैटिफाइज एनी रैंडम थिंग, नहीं होता हो। तो ये सब चीजें डराने की बातें हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको करना चाहिए कि नहीं, बट वी नेवर फेस्ड एनीबडी हु हैज गॉन। व्हाई वुड पीपल गो इन 2025 अदरवाइज? 2025 में इतने लोग जा रहे हैं, and you are going, let's say you are going, earliest is 26, some people in 27 listening to me, right? By the time you graduate it is 2028। आप ट्रम्प का टर्म देख लो कब से कब तक होगा, will he retire by then almost or not? You will see exactly सब कुछ। तो जिसको डरना है वो डरता है, जिसको नहीं डरना है वो नहीं डरता है। I had a very interesting discussion through my colleague, he was doing a podcast with one of the toppers called Yash Singh, who in 21 days got into Kellogg, just 21 days of GMAT, 21 days, not kidding। उससे पूछा कि आपको डर नहीं लग रहा यूएस जाने से? बोला नहीं, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे अपनी कॉम्पिटेंस पे भी भरोसा है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, आई एम गोइंग। नो, दीज न्यूज थिंग्स आर टोटली रॉन्ग, बट वही चीज है, दीज थिंग्स अफेक्ट अस अ लॉट।
Again, verbal and DI long sittings is a major focus here, major focus, because ये सारे areas हैं. We know how to break through these. Okay, we know, but कई बार push चाहिए. So you are saying I'm stuck at 40, 50, 60% and I'm not able to break through because you did not take the effort to really go that extra mile. आपने 60% के बाद persist नहीं किया because you want 90% the next day. That will not happen. There will be a plateau of a few days, sometimes a few weeks. We have to push through at that time. कोई माउंटेन क्लाइंबिंग करता है तो बीच में बोला जाता है, एवरेस्ट जाने के लिए भी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आई नो मच अबाउट इट, बट कि जो बीच का सफर होता है वो नहीं कि पहले 3,000 और लास्ट के 3,000, जो द डेथ वैली जिसको बोलते हैं या डेथ माइल, दैट इज सो क्रेजी. बट कुछ लोग हैं पुश थ्रू करते हैं, दैट इज लाइक ए फिजिकल थिंग. आपको यू कैन इवन डाई इन दैट डेथ वैली. That's not what I'm comparing it to, but the middle phase is always difficult. कोई भी मूवी में देख लो, शुरू में सब अच्छा चल रहा है, सडनली कुछ इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, दैट इज द मिडिल. 3 पार्ट स्ट्रक्चर बोलते, फाइनली द हीरो विंस. ये बेसिक स्टोरी है. मतलब बीच में तो खराब होगा ही होगा, ये नेचर का रूल है, हम नहीं बदल सकते. एटॉमिक हैबिट्स जैसी बुक में ये बात किया कि देयर विल बी अ वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बिफोर यू टेक ऑफ. देयर विल बी स्कोर प्लेटो. कई लोगों की कंप्लेन है कि मेरा बस ये, और मैंने उसका आंसर ऑलरेडी दे दिया है. द आंसर इज सडन इंप्रूवमेंट द नेक्स्ट मिनट, द नेक्स्ट डे विल नॉट हैपन इन दैट स्पेस. बिकॉज वी वॉन्ट एक्यूरेसी, वी गेट फ्रस्ट्रेटेड इन दैट स्पेस की नहीं बढ़ रहा है. लेट्स से दिस इज द रेंज इन दैट स्पेस. स्पेस मीन्स इस दोनों के बीच में जो फ्रस्ट्रेशन है, वी क्विट. कोई स्पेशल नहीं होता यार. मैंने इतने लोगों को पढ़ा है, मैं जानता हूं एक चीज, 1 से 2 लोग साल में आते हैं जो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि उनको तो सिर्फ सिंबॉलिकली टॉप 1% का नाम मिल गया और ठीक है, दे एनीवे वुड हैव क्रैक्ड बाय देयर ओन एफर्ट. 1 से 2, बट थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्कोर एवरी ईयर. 1 से 2 होता तो फिर तो ये चल ही नहीं रहा होता काम. एंड ऑल ऑफ देम अपार्ट फ्रॉम 1 or 2 आर सुपर ब्राइट. They probably didn't need her help. They just came because they just, किसी friend ने बोल दिया you should not take any chances. But if there are 1,000 people succeeding, I can say remove the 2, 998 are below average or average. Not even average. So many of them are below average. They are able to crack. So you need a reset. Why do I say this word? What is reset? 1 second. All of you, please, I'm advising you, do not text me. Otherwise, I'll have to just say that in the meanwhile, because then this entire session will get disrupted if one person also texts in between. We will talk. अगर जरूरत है तो we'll connect. Otherwise, reset का मतलब समझो, ये सिर्फ words नहीं है कि चैट जीपीटी से उठा के कुछ डाल दिया इसलिए ऐसा लग. What is repeat? I'll do what I've been doing. Reset मतलब let me go get back to the drawing board. Understand कि 5 बार पीएनसी पढ़ लिया प्रोबेबिलिटी, फिर भी मैं गलत क्यों कर. There has to be something that you are doing wrong. कि अलजेब्रा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है या जो भी है आपका, टेबल ग्राफ एनालिसिस, some people नया ग्राफ आता है फ्रीज. That's not the right way. Then how are other people able to get it? And I always say, until you succeed, all you have is hope and faith. Until you succeed, you don't have the result. Simple बात है, result तो है ही नहीं हमारे पास तब तक. तो ये बिलीव करना कि this system has worked for so many people, it will work for me, is any system. And it's not about संदीप गुप्ता system. आप कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो तो आपको उस सिस्टम पे फेथ होना ही, because that's all we have. We have only hope and faith at that time. We don't have anything else. So just take care. I'll come to all the issues that you are talking about, all the issues. Okay, ये सब आपसे मिले मुझे, उसका समरी लिया मैंने. Now structured approach and organized prep plan चाहिए मेरे को, ये पूछते रहते हैं लोग. Here I have a very strong disagreement. The prep plan that has been given to you has been organized after 10+ years of iteration कि ये बेस्ट होगा. वो प्लान फॉलो नहीं करना है हमको, बट हमें चाहिए कोई टीचर फिर से बैठ के बता दे कि कोई और क्या प्लान होगा. ऐसे तो नहीं चलता. एंड आई एम ऑनेस्ट, आपको नहीं ज्वाइन करना बैच मत करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है. किसी एक स्टूडेंट की फीस आए नहीं आए, मुझे फ्रैंकली कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरा पॉइंट कुछ और है यहाँ पर. You are anyway given an organized prep plan. Now, last 1 month I couldn't study. My job was hectic. I was traveling. I was doing this. I was probably family में कुछ emergency था. अब मुझे फिर से plan दो. अरे पर जहां से छोड़ा वहीं से plan follow कर लो. You don't need a new plan. Although we'll give you a new plan in this batch, but this is a very defeatist approach.
मैं बोलता हूँ ये यश सिंह जैसे लोग, जिसने अभी, मैं उसका एग्जांपल देने वाला हूँ, समवन हु गॉट अ 685 in 21 days in the first attempt. 21 days of that. Applied to Kellogg, got through. Kellogg is world's number 2 ahead of Harvard, right? This guy did not even talk to us. He did not need any other plan. He just followed one plan. And it is not one person, it is the story of everybody who succeeds. Just that our mind wants that, oh, मैं किसी से बात, एक बात बताओ, आप सोच के बहुत बहुत प्रैक्टिकली सोचो। किसी टीचर से अगर आप बात करोगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बात नहीं करना चाहता, मैं बात ही कर रहा हूँ आपसे, एंड पर्सनलाइजेशन बहुत ज्यादा होगा इस बैच में। बट सपोज यू टॉक, हाउ विल यू improve just by talking? You have the best plan made because I know कि इसने क्या अचीव किया है इस प्लान ने, for so many people who've gone to all the business schools. We have read Kritika's story, Wharton, $3 lakh placement, पर उसको भी बहुत frustration था. All, if I say follow the same plan, you just have to. But sometimes some of us just have this strong need कि रोज बात करके शायद कुछ हो जाए. The plan doesn't change by the day. Your plan may change कि कल मैंने plan किया, I couldn't study, so I'll make a new plan. But please stop making a plan. We've given you a plan. Although the approach in this batch is different, the forced nature and tight one, three things. Forced मतलब इतना discipline impose किया जाता है इस course में, इतना tight, because some people say weekend also is not very tight for me कि एक live weekend है. So it's an alternate day batch. The remaining day, अगर Monday को कोई class है तो Tuesday को आप बात कर सकते हैं, कंसल्टेशन, डाउट, सब कुछ. फिर वेंसडे को क्लास है, फिर थर्सडे को आप बात कर सकते हैं, फिर फ्राइडे को बात है, सैटरडे को आप बात कर सकते हैं. दिस इज द वे. मॉनिटर्ड मतलब डेली, हर बार मैं पूछता हूँ क्या परफॉर्मेंस रहा, कैसे करना है इंप्रूव, हर बार. एंड विल इंश्योर यू डोंट गेट ऑफ ट्रैक. इसके बाद भी हो सकते हो आप, ऐसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज समबडी पेज एंड डिसअपियर्स. इट्स अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ फेस, बिकॉज हमारे पास अपने माइंड पे ही कंट्रोल नहीं है. हाँ, आज का टाइम वेस्ट हो गया, फिर कल से पढ़ेंगे. ये जो है ना, आज का टाइम वेस्ट हो गया, ये बस बंद करना है आपको. बुरा मत मानो यार, मैं सच बोल रहा हूँ, और आपको पता चल रहा होगा कि यही प्रॉब्लम्स हो रही हैं. क्या पॉसिबल है 30 से 40 डेज में इतना इंप्रूवमेंट होना? मैं ये स्टोरी दिखा इसलिए नहीं रहा हूं कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, मेरे पास ऐसी हजारों स्टोरीज है. बट देखो, इसका ऑफिशियल स्कोर क्या था, 570. इसका 710. कितने दिन में उसने 140 लिखना था, 150 लिख दिया. इसका स्टूडेंट 30 डेज में हुआ. शी इज ऑलरेडी ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईएसबी, शी इज गॉट अ ग्रेट जॉब. हाउ मेनी डेज? if in 30 days you can have a 140 point improvement. She wrote this because उसने एक बार और GMAT दिया था 7, तो 560 आया था, and then 570, and then she contacted us. So she was not able to write वो वाली जो शायद score report, 560 to 710, because that was her first score. Next time she again prepared, she got only 570. If this was not possible, probably you've seen ये story इतनी famous हो गई है LinkedIn पे, इतनी ज्यादा, because this is crazy and it can happen. मैं आपको एग्जांपल से दे रहा हूँ, इसका वीडियो है मेरे पास. हजार बार she reaches out almost even now when she is graduated from ISB, just say thank you for changing my life, I would never have gone to my business school without this improvement. What did we do? Did we really sit down and pamper her and say कि नहीं रोज ऐसे पढ़ो? नहीं यार, प्लान है. आप बस, you just put your head down and just work for 30 days. If this can happen in 30 days, maybe it can happen max in 40 days for you. Who say कि नहीं हो सकता? ये problem है. We got to start believing. We really have to start. Look at this guy. He is right now studying, because I wanted to address both. So this is ISB's PGP, which is with WorkX program. This guy is Kritin, who is right now studying at ISB YL. YL पता ही होगा आपको, PhD Young Leaders Program. So he had less than 2 years work ex. That's why YL. He's actually studying. Look at this, President Entrepreneurship Club already. ISB, PGP, YL, whatever it is, जो भी इसका background था. 230 point improvement. He'll be joining also today to talk to us. But look at his previous score report. आप ये बोलोगे ये 455 और ये 685. आईएसबी के लिए 645 इज इनफ, बाय द वे, इफ यू डोंट वांट अ स्कॉलरशिप. 455 to 685, कितने पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट? तो ये इंप्रूवमेंट हो नहीं सकता
बिल्कुल गलत है, बिल्कुल हो सकता है। आप आई मीन यू मे बी एट 400 स्कोर राइट नाउ, ट्रस्ट मी यू कैन गेट इनटू आईएसबी R3। R2 आई विल नॉट प्रॉमिस, मतलब वो बकवास बात है कि नहीं R2 हो जाएगा, R2 तो बहुत मुश्किल। बट जब R3 में भी स्कॉलरशिप मिल रही है तो R3 में, जब पहले 3 साल पहले ऐसा होता था कि R2 R3 में चांसेस कम हो जाते थे, अब नहीं होते, तो दैट्स हाउ इट इज। Let me just see. This guy is joining us. He'll be joining us probably in 15-20 minutes. Yeah. My colleague Janvi, if you can raise his hand, I'll give you co-host access because you'll have to invite him. So if you're listening in, please let me see. Janvi, if you are there, let me just check. Probably not right now. All right, no problem. We'll see. Whenever he joins, we'll find out. Okay, the next thing. So look at this. This can happen, and I'm showing both the score reports. He will come and talk to you. Someone who's already studying at ISB is actually able to achieve. तो यही चीज है, समरी बहुत सारी चीजों की और थी कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, फियर ऑफ मॉक्स। मैं ना इस चीज का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं कि मुझे मॉक से डर लगता है, मतलब यू गॉट टू राइट इट यार, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होता। समबडी कैन मोटिवेट यू, दैट यू विल नो कि वो मोटिवेशन भी फॉल्स है कि नहीं मॉक्स लिखना चाहिए। इट्स सिंपल, यू गॉट टू गो थ्रू हेल फायर एंड वाटर इफ यू वांट ट्रायम्फेंट ऑन द अदर साइड, दैट इमेज ऑफ योर्स that you'll be proud of looking at in the mirror, you cannot have all this fluctuating score तो होगा ही ना कोई mock। even GMAT prep mocks are not designed as a standard। GMAT prep mocks have a standard deviation of 30 points। what does it mean? If you score 655 on a day, the next day you can score minus 30 or plus 30। this is the standard deviation, मतलब ये तो fluctuation range है। but one day you may not may be able to concentrate, one day you may not be able to concentrate, one day a long RC just trumps you completely, one day you're able to sail through it so फ्लक्चुएशन तो होगा ही होगा स्कोर में। आप जीमैट क्लब पे जाके मॉक दोगे, उनकी स्कोरिंग पैटर्न अलग है, हमने अपनी स्कोरिंग पैटर्न बहुत डिफिकल्ट बना के रखी है, इट्स हार्ड टू। जीमैट प्रेप इज अ मोर रियलिस्टिक, so fluctuation can come because of that also। somebody will say that no, I scored 595, next day 515। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इससे डरने का कुछ नहीं। by writing so many mocks, what happens is we minimize the probability of fluctuation itself। दैट्स इट। वह डर के कैसे चलेगा, लेकिन कैसे चलेगा? हाउ टू हैंडल, हाउ टू एनालाइज ऑल दिस, ऑब्वियसली यू नो हाउ टू। मोस्ट पीपल डोंट वांट टू एनालाइज अ मॉक as thoroughly as they should। error logs they don't make, they don't revise, and आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग, ये हमारा स्टैंडर्ड पैटर्न है सबका, और ये मेरा भी हो सकता था जब मैं स्टूडेंट था। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन। one more thing, you got to balance personal and professional commitments, and it can happen। But now if you want R3 या R2 में, अगर American colleges हैं, US UK France etc INSEAD all this, R2 नहीं, मतलब वो कोई, there is a January intake of INSEAD that will happen by March, all that। if you want R3, let's say just standard, R2 बहुत मुश्किल है, but let's say for some schools R2 is also in Jan, maybe in some schools Feb। you have to forget all this। I'm not saying family emergency you can forget, but कम से कम जो intentional है या work that you have to talk at your workplace, कुछ तो कर, travel मत करो 1-2 महीने के लिए। emergency I can't say you avoid, you they are emergencies, you have to take care of them as they come। बट हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, ये आप अभी भरोसा नहीं, यू विल से ना आई एम नॉट वेस्टिंग एनी टाइम, आई एम नॉट इम्प्रूविंग। दैट्स द डिफेंस स्टूडेंट्स कम अप विथ, वी विल सी दैट थिंग। नो एक्सक्यूजेस इन दिस, वेरी इंटेंस। इसमें उल्टा भी हो सकता है कि some people are not able to take the pressure, so don't join, it's a boot camp, please remember। if you want pampering, I'm not doing this in this batch at all, there is no pampering here, it's a serious boot camp। and once again, I'm a working professional, long working hours, how can I've shown this example many times, I'm not going through the video, but this guy Bhave, who got a score of 735, which is 100 percentile, also had a job। so he was very happy, all that पता नहीं क्या क्या उसने जो भी लिखा, but more important what he wrote was more than 12 hours weekends he was studying, and 5 hours a day every morning 5 a.m. to 10 a.m. because उसका जो job था 12 to 14 hours का था Deloitte में। He's like 10 a.m. I used to log in, I never knew when I would log out। 12 भी बज जाते थे, कई बार 11 बज जाते थे, रात के 10 बज जाते थे। that's why 10 to 12, 10 to 12 hours क्या होगा, मतलब 12 to 14 hours क्या, 10 a.m. you log in, if it is 14 hours, it is 12 night।
Despite that, waking up at 5 a.m., studying for 5 hours, and then getting 100 percentile. And he scored, he was not bright. Please remember, पहली बार 580 था, इसमें से 55 कम कर दो, क्या स्कोर आएगा खुद ही सोच लो. 525 was his score. From there 735 आपके सामने है, आप खुद बात कर लेना इससे आपको कर. And so on and so forth. But this has happened. That's why we've had so many other students. This girl Neha used to work according to her कुछ private equity या किसी में उसका काम था. Finally made it to Harvard. Look at this. इसी साल ज्वाइन किया उसने. And she got 725. ये सामने score report भी है आपके. But with that long, because she was CA and investment associate or something, बहुत ही crazy type का work था. And she got a Harvard admit. This girl Meghal, she got into Wharton full easily, but she was working at Visa in the US, Visa Consulting. Very tough works. 12-14 घंटे तो काम होता ही उस. What has she written? Wharton accepted already. मतलब तो ज्वाइन भी कर लिया होगा, पुरानी बात है. Whatever, I'm not even sure what she joined. I have not kept track. So accepted at Wharton, world's #1 business school, by working such long hours. So possible है. Is all I'm trying to say. I mean, all of these people have gone ahead and said. मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये possible है. We have seen this example multiple times. Those of you who do not know, somebody who was working 14 hours a day is not the point. 14 hours a day, some people work very normally, but for 6.5 days, 6.5 days, 14 hours a day. This, so Sunday ko bhi 7 hours she was working, Saturday 14 hours, and then she got to 718, pure 9 weeks, first attempt. So bilkul ho sakta hai. My thing is, you really have to say to yourself that 30 days मुझे कोई हिला ही नहीं सकता अपने टेबल से जब मैं पढ़ रहा हूँ, और एक दिन भी गैप नहीं होगा. Please remember, 29 days is not consistency at this stage. You can't do 29 out of 30 days of study. You just can't do this. This is important. Another thing, focus for long hours. बढ़ाना पड़ेगा ना, stamina. There are people, even today when we did the previous intensive batch, some people are writing their mocks and they're like, I can't sit, because you've never sat, you've never pushed your boundaries. If you can sit for 2 hours, push your boundaries to sit for 5 hours, 10 hours on a Sunday. That's what. So ये भी चीज है कि बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बट करना पड़ेगा ना यार, करना पड़ेगा. आपको रिवॉर्ड भी चाहिए अदर साइड, दैट आई वांट टू गो टू बिजनेस स्कूल एंड आई वांट टू इंप्रूव माय लाइफ, एंड यू आर नॉट एबल टू गो थ्रू द ग्राइंड. इट्स टफ. दोनों चीजों में से एक you have to. Again, past failures. If past failures actually pull you back, I feel very sorry and sad for you. मतलब मेरी लाइफ में तो मैं गिन ही नहीं सकता how many times I have failed, how many times, but I don't know. Next day I forget the past completely. मेरे दिमाग में रहता ही नहीं. When unless I have to tell my story on a podcast, I remember कि हाँ हुआ था, that too jokingly now. मुझे बिल्कुल ट्रॉमा नहीं है उन चीजों का. कैसे चलेगा कि यहाँ पर आप हो, ये आप खींच रहे हो आगे, एक साइकिल जा रही है, बाइसिकल से यू आर पुलिंग योरसेल्फ, और एक ट्रक आपने लगा रखा है जिस पुल बैक कर रहा है आपको. हाउ विल यू मूव फॉरवर्ड? यू हैव दैट ट्रॉमा ऑफ पास्ट फेलियर कि फायदा नहीं है पढ़ के, कुछ होगा नहीं. When you study, you just study. When I work, I work. When I don't work, I don't work. Simple. So this की बाइसिकल मुझे आगे खींच रही है और एक ट्रक मुझे पीछे खींच रहा है. सो ऑब्वियसली यू विल नॉट मूव फॉरवर्ड. इसको हटा दो. ट्रक इज योर पास्ट. You remove, even a bicycle is good enough. Probably it will turn to a bike, probably it will turn to a speeding car after that. When we put in effort, we can go fast on a bicycle also. This is, ये लेकिन हमको हटाना पड़ेगा. मैं इसके लिए कुछ कर नहीं सकता हूँ. Frankly, I can't do this कि past कैसे हटाना है. You got to forget it. If you don't have control over your own mind, trust me, this exam will never be conquerable. This exam क्या life में बड़ी success कोई भी नहीं मिलेगी आपको. And this 99 percentile आपको जिस पे भी जाना है, obviously we are keeping it ISB focus because in India many people want to apply to ISB R3 and so on. Anyway, this will be addressing. Again, this is my last chance. Let this be my last and decisive attempt. Exactly
गो लाइक दैट इनटू द रेस। मैराथन दौड़ना है और आप पहले माइल में आपको लगता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, तो कैसे होगा फिर? कैसे होगा? एंड प्लीज डोंट थिंक ही इज रैंडमली मोटिवेटिंग। यही प्रॉब्लम है आप सबका। आई नो इट बिकॉज आई टॉक टू स्टूडेंट्स। मेरा काम ही है कि मैं स्टूडेंट को ही गाइड करता हूँ हमेशा। सो दिस ऑल्सो एंड माई समरी यही है, आपको लाना तो यही पड़ेगा कि 5 6 weeks I'll go all in. यू मे से द वर्ड ऑब्सेशन, यू मे हियर इट फ्रॉम मी एवरी डे, कहीं ना कहीं पे मैं बात करता हूँ, मेरे किसी ना किसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। लेकिन आप में से बहुत कम लोग हैं जो ऑब्सेस्ड हैं। इफ यू अटेंडेड द लास्ट सेशन दैट आई डिड अबाउट 2 months ago, आई सेड कि ऐसे भी तो लोग हैं ना जिनको पूरी दुनिया कॉन्कर करनी थी। in their mind in the 20s, Alexander the Great wanted to conquer the whole world, not Asia, not। और हमारी जो ऑब्सेशन है वो तो है ही नहीं उस तरह की। तो आप ये बोलोगे आई एम फुल्ली ऑब्सेस्ड, ये रॉन्ग है, स्टेटमेंट ही गलत है। ये कहना कि नो आई एम ऑब्सेस्ड, ये रॉन्ग है। ऑब्सेशन का मतलब ही होता है यू कांट सी एनीथिंग एल्स 24/7 365, यू जस्ट कांट सी, एक ही चीज दिखती है, दैट इज ऑब्सेशन। तो वही चीज है, आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन से नहीं होगा कि नहीं मुझसे कोई बात कर ले। वी विल बी रेडी टू टॉक टू यू इन दिस बैच, बट दैट इज नॉट ए सोल्यूशन। बात करके बात, इफ यू वांट टू टॉक स्ट्रेटजी, टॉक टू अस। इफ यू वांट टू टॉक, जस्ट टॉक मोटिवेशन। इन दैट, क्योंकि फील गुड से क्या होता है यार? फील गुड से होता क्या है? एग्जाम तो फिर भी लिखनी है। ओ आई फेल्ट गुड टॉकिंग टू यू, डजंट मेक एनी सेंस। इट मेक्स नो सेंस टॉकिंग एंड फीलिंग गुड बिकॉज आफ्टर 1 hour you'll still feel bad. अंडरस्टैंड, ये ह्यूमन नेचर की आयरनी है, अदरवाइज आई वुड ओनली बी टॉकिंग टू पीपल। इट डजंट वर्क, टॉकिंग डजंट हेल्प। एंड आई एम स्टिल सेइंग 20 to 30 years आप 1.5 महीने के लिए लॉक इन नहीं कर सकते। अगर I'm sure everybody is around minimum 20 years of age and many people above 30 also. So I'm just saying 20 to 30 years of life. हम 1.5 month की consistency नहीं ला सकते। And then we resent the world who succeed. People who succeed, we just are jealous of them. कि यार इसका स्कोर आ गया, ये चला गया यहाँ पर, ये मैं। Why? Because there is something that they did differently, and not because they were super intelligent. That's it. It is possible. Returns are asymmetric. Asymmetric, we all understand by now, I hope. Very little effort gives you very, very big return. अगर सच में 30 से 40 दिन पढ़ लिया आपने और अगर आप किसी टॉप 20 स्कूल में चले गए तो लाइफ तो बदलेगी। कृतिका की स्टोरी देखो ना, कृतिका की, अभी कृतिका की भी छोड़ो, आपको कमिला की स्टोरी अभी दिखाई थी मैंने। हाउ मच टाइम डिड शी टेक? हाउ मच टाइम? शी सेज शी टुक 30 days में क्या 30 years नहीं बदल गया? ISB graduate in India will do very well. I'm not saying they'll become global CEOs, obviously वो नहीं, but in India they do pretty well। 5 10 साल में कहाँ करियर पहुंच सकता है? इन हाउ मेनी डेज? 30 days में 30 years चेंज हुए? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये सबके लिए एप्लीकेबल है। इट इज नॉट द शी सक्सीडेड सो वी आर टॉकिंग, नो, इट्स पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस। I have to grab those 30 days by the scruff of the neck and say that full stop, enough of dilly dallying, enough of half-assing, enough of random efforts, enough of inconsistency. I am taking the rest of the year by the scruff of the neck and I am getting past this misery. On 1st of January, I want to look at myself proudly in the mirror that मैंने लाइफ में कुछ तो अच्छा अचीव किया है। एक स्कोर आएगा तो अपने आप बाकी कैस्केडिंग इफेक्ट आ ही जाता है। यू कैन इवन गेट अ स्कॉलरशिप विद अ स्कोर, यू कैन गेट अ स्कूल विद अ स्कोर, ऑल ऑफ दैट, इट्स डेफिनेट। अगर ये मेरा स्टेटमेंट झूठ है तो आप बताइए कि 30 दिन में 30 साल बदल सकते हैं। मैं सच कह रहा हूं। ये लोग जब बोलते हैं ना हम लोग, तो मानता नहीं है कोई कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, 30 days में कैसे 30। दिस इज कॉल्ड एसिमेट्रिक रिटर्न। थोड़ा सा एफर्ट, लेकिन फोकस्ड एफर्ट, वो पूरी जिंदगी बदल गई। ये नहीं करना है तो अलग बात। रोते रहना है तो यार ना आप मेरे पास आओ ना किसी के पास जाओ। आपका थेरेपिस्ट भी कुछ नहीं कर, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर लाइफ में रोते ही रहना है ना तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता आपके लिए। ओके, या आई थिंक प्रियांशा इज देयर। Priyansha, I'm making you co-host. I guess he has joined. Let me know if he has joined. Let him also raise hand. 1 second. Yes, Kritin, just 1 second. So, Kritin, I'll just speak to you. I'll come to your slide, which I was showing these people. So, just 1 second.
So I told you we have Kritin with us right now. I'll give you the chance to speak and everything. I'll put you on camera, all that. Just give me one sec. So 455 to 685, first of all, the improvement itself is so massive, it is unbelievable. And he's studying at ISB and he's doing great things at ISB. It's not like just studying, he's president of Entrepreneurship Club. This is the first batch of ISB while, and I'm very sure that this will give. They'll say, no, no, IIT hoga, ye hoga. No, he's not from an IIT. You can see here, nothing like that. And he also struggled. I'm sure I've not spoken to him ever, but I'm sure he will tell that when he got his strategy right, when he got his tempo right, when he got his pacing is not speed of solving questions. Pacing, matlab mind that this is the best way to go. I may not have been following what I should have been following, maybe that. So we'll discuss that. 1 second. Let's see. So this is his 455 score report. This is his 685 score report. ये improvement possible है, and here he is. So let me stop my screen for a second and let me pin you. Yeah. Hey, hi Kritin. Finally, we get to see each other and talk. I think I've been hearing about you for quite some time, so really, really awesome. I hope your voice is there properly. Can you just speak? Yeah. Yeah. Hi, sir. Am I audible? Absolutely, absolutely. Warm Yes. welcome. Really. Thank you so much, sir. I've been waiting for this. Like, I remember there was a time after my first attempt, I was sleeping on my bed list listening to one of these webinar, and there were two other people talking, and I was like, "Hey, one day I want to be there. Talk to Sandeep sir once. It is a privilege for me to be right now with you. So thank you so much for giving me this opportunity. Thank you for this session and opportunity for me also to talk to you. So Pratim, just take us through. I'm sure you haven't had too much work ex, otherwise while would not have happened. तो Yeah. थोड़ा जर्नी के बारे में बताओ और finally how you were able to jump your score from a miserable 400s to a very respectable 685. थोड़ा बताइए. Hello, Kritin, your video I think is Yeah, jammed. yeah. Yeah, yeah. Hello. Your video seems to be jammed, Kritin. Please, so just have, I think. Let's see. Yeah, I'll just change my network. Yeah, yeah, sure. If you could, please. Hello. Yeah, Kritin, Yeah, now perfect. it's perfect. Yeah. Yeah, So I yeah. did my Just, undergrad, just and take us during to your that time, journey. हाँ, बताइए, please. yeah. Sorry. So during that time, somewhere I realized that I want to do an MBA for Mhm. not so good reasons. Now I can see what would be a good reason. But so समय मैंने CAT दिया था, that was with zero preparation. So I got somewhere 95. So that boosted my ego that okay, without preparation I was 95. And at that time I had submitted a form for ISB also. So मेरे को Mm. GMAT देना था. I gave the GMAT exam, went with the same confidence. I just took the lectures from top 1 percentile. And I remember that I was bad in verbal. So I did everything which was there in RC, as in the lectures and all, did marathon lectures and did not practice a lot. Gave the exam and that was a miserable attempt for me. I could not understand the exam. It was like the exam was controlling me altogether. The questions were just being thrown up at me. And there was at one point I was like, कि बस खत्म करो इसे. I want to get out. Whatever it is, I want to get out. So this is what was happening. I came back. I felt very bad because I did not Okay, expect one this of thing, me. एक तो 95 percentile CAT में आने के बाद you feel probably not even what it would be what 30 40 percentile. I'm not even Yeah, sure. something like that. Yeah. That's really And I was really not able to understand the exam. I had no idea how the questions would be thrown up. I had no idea of how to attempt the exam basically. Not right. the questions were not difficult because when you reach a 30-40 percentile, questions are extremely easy. It's just that I was not in the mindset to give the exam because of no mocks, no preparation, not reading about the exam, nothing like that. I did not even open the after class action PDF which was sent to us before that. So तो ये uh, ओवर कॉन्फिडेंस से हुआ या कि सोचा कि अब तो ठीक है मतलब आई हैव अंडरस्टूड माय वीकनेस वर्बल था प्रॉब्लम वर्बल सीख लिया बाकी मैथ डीआई तो आता ही है कैट से तो ये था रीजन या क्या था I think एक level of overconfidence भी था because I saw my friends and all who prepared a lot and they were not able to score even 93, 94. I went with zero preparation, so I was like, "कि, okay, quant and DI is very strong for me." हम्म And I had also this assumption that GMAT is comparatively easier than CAT, ओके but those are two different exams, two different या patterns. इट्स This नॉट I did इजियर not और know. टफर एग्जाम्स अलग अलग है पूरी It's apples and oranges. You cannot या compare them. So वो था and then I gave the exam and it went very bad. So I came back and I realized कि यार ऐसे तो नहीं हो पाएगा and this is not a score which I'm submitting हम्म because वो realize हो जाता है कि questions are extremely easy.
It's Hmm. not the questions which are difficult, because 30-40% any class 10 guy can solve it. So this is what was happening with me. And Hmm. right after that, my job was also starting. So Hmm. I got admitted in KPMG during that time. It was a big four. The work hours were a bit longer, and I had to restart my preparation journey right from scratch because abhi tak Hmm. kuch nahi hua tha. I started it. My work hours were almost like 8 to 10 hours. I used to be in office. Along with that, my client was 2 hours away from my home. So I used to travel 4 hours daily. And उसके Oh. अलावा I had to prepare for GMAT. So my schedule used to be that I used to wake up at around 5 o'clock, give 2 hours for GMAT, 7 o'clock it used to be. I used to go back to my work, come back around 11 o'clock, 12 o'clock or something, and then sleep whenever I used to come back. And Hmm. this is the preparation journey which I had for 2 months, giving 2 hours daily. Now coming to what changed like in the next 2 months. Yeah. One thing which I did was that first thing which I did was completed your essays and all which was given to us. Know Hmm. the world lecture, I completed it as like, yeah, I have no clue what to do next. I'll first complete it. And I had the clarity right after that. The clarity which I had, ki this is what I want to do is unbeatable. And thank you so much, sir. Like the best part, if I can take, even today when at ISB we are having a discussion with professors, or I'm hosting something, or like yesterday we had a session with Sarthak Ahuja, sir. So there Oh. also I bring out these things and they are also impressed ki wow, this is extremely good. So I Know think the the best world is learning what was we're that. talking about. You're talking about know the world here, right? Know the world lectures, yeah, all of them. Yeah. Yeah. So that was the best thing which I had. Right after that, I was like, now let's start the preparation journey, how to do it. Hmm. So in quants, I was strong. I was pretty confident about that. When Hmm. it came to quants, what I did was I completed all the questions of 700 and 800 level. Hmm. Along with that, I did a lot of questions from GMAT Club also. And that Hmm. was an advice which was given from top 1 percentile Yeah. only. Yeah. 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 Go and do from 700 plus and 805 plus. So Hmm. this is what I did. But the important part was not doing the questions. I followed everything point by point which was there in after class action PDF. And if someone does it and stops using his or her brain, 735 is a very easy score. I think 685 is still bad. 735 is a very easy score if you follow every single Please thing which is listen, written in the everyone, what he's saying, because sometimes we don't believe in it and we keep on asking a new plan. Give me a plan. Give me a plan. प्लान जो दिया है आपको वो बहुत सॉलिड है हमने 10 साल लगाए हैं उस प्लान को बनाने में एंड व्हाट ही सेइंग इज वैलिडेटिंग इट सो या गो अहेड कृतिन प्लीज Yeah. So every single thing which was there, I followed it. I was like, even if I get 2 hours, I'll do exactly what Sandeep is saying. And I stopped using my brain. I stopped reading in Google, YouTube, Instagram, how to prepare, how to get 735. I did not do any of these things. I'll just follow this as a Bible. So quants was that I followed these two questions. The important thing was that for every single preparation, there's one important thing which was written was that once you sit, at least sit for 3 hours in one sitting and do these many questions. I don't remember the number of questions. या Now that is something which was helpful, that you need to sit at once and complete it like you are doing an exam, and everything needs to be in a timed manner. When I started following it, quant score started going extremely good for me. In the exam, I made a few errors in the first few questions. That's why my score became a bit less. But my quant score in my mocks and all was always 100 percentile. And that राइट was because of this journey. Secondly, if I talk about reading comprehension, I have not been an avid reader. Like, I have been a guy who used to go to YouTube for normal school lectures also because I avoided reading. What Octave did for me was that it broke it down like maths. It was like logic. It's like how you would be reading. Like this is how I put it, ki how you would be reading that passage. Octave is teaching me how to do it. Once I started following it, started doing it with the on the live lectures with you, recorded lectures with you, and then doing it myself, my brain started breaking down every single comprehension passage in that particular manner. And that started happening automatically after 300, 400 passages, that I started reading in a particular manner. Now, राइट what helped me was not in the exam, but along with that, right after when I was done with the preparation, from a guy who used to just look for videos and avoid reading whenever possible, I became a guy who used to ask people that don't give me a video, give me a like something which is written and I'll read it faster. So that was something which was very helpful, and that is beyond the exams, and that is true for GMAT. Now, this is राइट something which is helping me at ISB also. I can read faster than other people because I know how to read. And I या can read anything, whether I know that or not. So Octave, sir, it's like magic. I don't know how you made that, but it's actually like magic for someone like me. So, राइट and I started enjoying the process. This is what started happening with these two steps. I started enjoying it because somewhere I realized it's not about the exam. It's something more than the exam. I started feeling now when I come to CR, this will become more clear. For critical thinking, again, what helped me the most was the long sitting, which we have on the portals for 3 hours or something. We need to attempt 100 questions. Now, when you attempt 100 questions and that too you do on a daily basis, there are three, four attempts which you can give.
Once you start doing that, what happens is that automatically like something like magic happens, and then your brain stops like making you think that okay, this is a weakening question, this is a procedure which I need to follow. That started happening automatically. I was not thinking how to do it, but it was just happening in the correct procedure. Now, Right. what happened because of that was that whenever I used to go for a debate competition or for some argument or some negotiation in my job, I was able to break down the arguments faster and better. If my director is saying something and I know that this is wrong, I could convince him better. Normally, I was not able to, but I was able to convince him, okay, so this is a wrong premise. And Mm. this is the first thing which you learn at ISB also when you come. The first thing which teach you and the dean teaches you this is how to break down the arguments better, how to Absolutely. understand premise. That is a life skill which happened with me. So I did all the long sittings, and again I was focusing only on the difficult questions because the easier one was done. My major problem was that after class action PDF was left, because of which my scores were not coming. I was not able to understand the exam. Then coming to IRDS, IR, what helped me was that I completed all the mocks and in one sitting, and no cheating in that. Like today also, like I have a lot of friends and all who are planning to come to ISB or some other STEAM college, and they ask me how to prepare. The mistake which they make is that they don't give the mocks like it's an actual exam. They'll हाँ, give the एग्जाम mock. को पॉज कर देते हैं बीच में या ब्रेक ले Exactly. लेते हैं क्योंकि जीमैट प्रेप में भी ये प्रॉब्लम है. दे अलाउ यू टू पॉज. So this is Ah, really, exactly. yeah, I So the guess. moment they pause, it's of no use. You have wasted that mock. Basically, it's like that. So Yeah, either they pause, or sometimes they'll use the calculator, and that to the hand calculator, not the one on the screen calculator, or they'll do something else. I have seen people pausing and then thinking how to solve it. yeah, So I did not do any of these things. I gave all the mocks and I gave it like it's an actual exam. I used to sit and complete it right from scratch. And that helped me again. Again, when you do 20, 30 mocks, like you used to say in your webinars and all also, once you start doing 20, 30 mocks, you don't need to think after that. You are done mhm, with 30 mocks, 30 I had done, and now it will happen automatically. And once that starts happening, you know that you are on a good pace and you will do good. And you'll start enjoying it also. So for IR, I did that. DS was again one of my favorite topics because my problem in studies have always been that I used to think a lot when it comes to a question. So think, okay, this can be done this way also, that way also. Now DS was something which was asking you to do that. It was asking you to understand in how many different ways this particular problem can be right, solved. right, Again, that muscle helps you in real life. Once you start having it's not about maths or stats or something like that. It's just that once your brain starts analyzing a problem in a manner that okay, there can be four different approaches of doing it. You start doing that in everything, every aspect of life. You're preparing for a case com, and your brain will tell you, okay, this can be done in four different ways. And that is something which will be respected. That is how you get a different point of view. So for right, DS, I did the same thing. I followed everything. There was DS 426 questions which were there. I completed it one sitting, like two or three sittings I did, and all in a time manner. Once that was done, I started with the mocks. First, I completed a sectional mocks. Again, the mocks were done like it's an actual exam. No breaks, no shortcuts, nothing. I'll give one sectional mock of quants, then one of verbal, then one of IRDS. And I would analyze it. Like if I was giving 1 hour to give a mock, I was giving 2, 3 hours to analyze it. And that time started reducing after a point of time of analyzing because I started realizing, okay, this is where I'm going wrong. If right, I realize, okay, in this particular section I'm going wrong in quants, I'll go back, I'll see the lectures if required. Normally it was not required, or I'll go and practice the questions again where I'm going wrong. There would be some marked questions which I have that used to reduce a lot of time, because for me, time was a very massive constraint. I just had 2 hours every day. I could not break out of that. And Sundays I had to take a rest sometimes, or sometimes I used to work for 6, 7 hours. So this is what was happening. I used to go back, I used to read every question, understand where am I going wrong, and then come back again. If I find that okay, this section is still weak for me, I'll go to GMAT club and practice that particular question 700, 805 level. right. So, and then I did the final mocks. I was scoring very well in the final mocks. In the exam, I did not score as much as I was expecting, but still it was good enough because the profile What and was all the that. highest mock score, by the way? So just I used to get 735. oh, that's fantastic. So now the exam experience I want to hear because then that's what. Also, I want to know after this question, if somebody has only 40 to 50 to 60 days max, what can they do right now? They are not starting GMAT. They are already in the prep and they're just looking for the final battle to be won. So two questions. How was your mock overall experience? And the second thing, as I just said, that if you have very limited time, 30 to 60 days ka window mein, what they should do one by one, please start. So, Okay, so if I talk about mocks, like top 1 percentile ke mocks were actually one level difficult actually a lot difficult in the actual exam. So uh, what happened to me was that when I went to the actual exam, I don't know, it was for me or someone else, it could be different, but for me it was that when I went for the actual exam, it was like, okay, this is very easy. So I was scared ki I'm doing something wrong, I'm doing something wrong. This is what oh, was happening with me. psychological thing, yeah.
Yeah, so that should not be happening. That's a very bad thing to happen. But for me, it was happening because I gave all the exams of top आप mocks अपना of top सेक्शन one. ऑर्डर बताइए एग्जाम में क्या था और उसके Okay, बाद। so I used to start with quants because हम्म। I was very confident and I did not want to do bad in that. हम्म। And secondly, I used to go for RC, VRC. The हम्म। reason for that was that once I gave a quant attempt and all, I am pretty sure that it would go good. That was my हम्म। assumption that it will go good. And once it goes good, I am in a good confidence space and my brain has also started working. I'm now familiarized with the place where हम्म। I'm giving the exam. So I'll give verbal because verbal had to go very good. This is what happened with me that when verbal used to go good, my overall score used to go very good. This was डेफिनेटली। in MBA.com mocks also. So I did that. Then I used to take a 10 minutes break, just relax because now I have a basic, like my brain has started working on quants and verbal. Now IRDS is a basically it's a combination of both these subjects. So now राइट। when I used to give IRDS, it used to go very easily. So this was the order which I used to follow. तो एग्जाम में क्या हुआ, एक दो आपने बोला कि शुरू में कुछ क्वांट के क्वेश्चंस में गलती कर दी, उसके अलावा डिड यू फाइंड एनीथिंग जेन्युइनली अनफेमिलियर कि यार ये तो मैंने Nothing. देखा ही नहीं, कुछ कुछ Nothing. अलग ही आ गया? No, sir, nothing. Honestly, nothing. In fact, like specifically for RC, I'll still say I don't know what the passage was about. I had three passages. Two, I had no clue what it is about because I had no idea it was something related to some philosophical concept, but I was हम्म। able to score well just हम्म। because I knew how to do it. In terms of critical thinking, again, there was nothing new. All the techniques were taught. I had to just follow it point by point. And by this time, I did not even think about it. I knew, okay, this needs to be done this particular manner. Maybe there क्वांट were में one कुछ or अनफेमिलियर या कुछ Quant क्वांट? पे तो there was nothing. Quant में there was nothing. Quant पे it was almost like कि I am telling you, I was scared कि I am doing bad. Something wrong इतना happening. इजी कैसे हो सकता है वो वाला बैड? Exactly. Because Quant K, when I used to give top 1K mocks and all, there used to be at least one question or two question where I'm confused. Or after the exam also, I used to think, कि, okay, where did I go wrong? Or how could it be done better? But इसमें there was nothing like that. In fact, मेरे quants में I completed that paper 15 minutes early. ओ। So I had time for verbal where I had like 15 minutes where I was just resting and like keeping my brain calm for the next paper. It was that easy. Also because I made a few questions ओके, of लॉट्स ऑफ पीपल आर वेरी स्केर्ड ऑफ डीआई सेक्शन जनरली। डेटा इनसाइट्स में जो डीएसआईआर है, इसमें एक्चुअल एग्जाम में क्या सच में टफ होता है इतना जितना डरते हैं हम लोग? या आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बिकॉज आई वांट, एवरीबody thinks that no, this section is just a nightmare for them for some reason, so just want to know that from you, like. Okay, so IR, if I talk about IR, then it's not. It's genuinely not. It's very easy. In fact, once you, again, the same thing. Once you practice 30 mocks, you are done with IR. There's nothing because now it's very easy. There's no concept involved in that. It's just that how fast you can see the data and how fast you can analyze it. If I compare it with CAT or something, there's still like there are the questions which you have in the data insight section. It's still comparatively very tough. But Yeah, here it's not tough. There's nothing to be done. There's no aptitude which is required. You just need to understand where to look at the data. And that will only happen when you do the mock. You watch as many lectures as you want to, or have हाँ. someone else solve it for you. I don't think that's going to help you. The only thing which will help you is that when you're doing it yourself. And you need to do it again and again, again and again, Mhm. till the moment it starts happening automatically. When it comes to data sufficiency, maybe in the initial few questions of your preparation, it might be difficult because it's a new concept. You have not solved a question like this. Like I did not solve a question which was requiring a concept like this. But once you start understanding that, okay, this is how it needs to be done, and that will happen in the first 50 to 100 questions. Once you are done with that and then you practice another 300, 350 questions, it's a piece of cake. There's nothing to be done. In fact, the reason I used to एग्जाम have में कुछ IRDS अनयूजुअल नहीं था डीआई सेक्शन में कुछ? Nothing, sir. Nothing. IR में तो कुछ भी था. DS में भी there was nothing. Like I'm telling you, once you are done with all the mocks and all the questions, it's not. I don't think it's possible you'll get a question which is different or definitely not a question which is more difficult than it. There might be थोड़ा बहुत number ऊपर नीचे हो सकता है. Words can be different, or they might confuse how the question is being asked. But the concept which is being tested is going to be like is you must have covered it. And I'm 100% sure. That's why I'm saying this. What you need to do is that once you complete the lecture, you just need to follow every single thing which is there in the after class action PDF. I used to take a printout of it, paste it on my study table, and then cross out every single thing. Okay, I'll complete it all. This is crazy. This is great. And just tell one last thing here, and then I'll talk about life as ISB right now, that as well. But Yeah. tell me, if you have 30 to 60 days and you are at some stage of prep, you're not starting from zero. This is what the group is right now that we are addressing. What can they do best? Like how to optimize this? I think one would be again like follow whatever sir has said, but if I need to add anything above that, the one of the most important thing would be that when you're giving a mock, when you're practicing any question, it needs to be on a time manner.
You might solve 100 questions without time and it's of no use. It's like just wasting those questions, nothing else. Secondly, try to do for long sitting. This is what I've realized when the exam, when you sit for 1 or 2 hours directly and then you have not practiced it earlier, your brain doesn't work because the pressure is also insane when you're entering the exam. Hmm. So do that. Thirdly, practice the difficult questions. If you're aiming for a 700, 735 plus, you need to be at a stage. There'll be a stage like if you guys have practice, then you would be at a stage where you know how to solve a massive amount of questions. But what is required is that every single day you're challenging your brain to think on something which has not been done. And that is something which you'll only get if you practice the difficult questions. And GMAT Club also helps a lot when it comes to 705 plus or 805 plus, Yeah. along with the top one mocks. And most importantly, when you're giving the mocks, give it like it's an actual exam. Don't take any shortcuts. Don't give a mock. It's okay if you give just 1 or 2 mocks, but don't take any shortcuts in that. Don't use calculator. Don't pause or don't just like pause and like think about how to solve the question. You're just fooling yourself and it won't help you in the exam. And do it in the order in which you're doing. And as much hours as you give for the mock, do like twice it and then give it for the analysis of the mock because that will tell you where you are going wrong. And another thing, whenever you're studying, like this is something which was told to me by someone, was that you need to enjoy it because it is fun. If you realize it, it is fun and it is preparing you for the life which you'll have at an MBA college also. If you do perform well here, you will perform well in the MBA college also. That is what the exam is testing you. So whenever you're studying something, just have that sense of enjoyment ki whatever the marks, my brain is improving. I'm able to negotiate better. I'm able to think better. I'm able to solve better. And that is what is required. And specifically for someone who comes from a commerce field, we did not give a lot of time when we were in class 11 and 12 for JE prep. That also helps you in a similar manner. It helps you break down problems better. So if you have not done that, then take this as a like stint of 2 months where you're improving your brain function. That's all. Superb. And how's life at ISB? How was it, like a different world for you? Was it the same extension of your undergrad college? अभी क्या चल रहा है बताओ थोड़ा सा. So How intense not is it, first of all? Is it pretty intense like that? we had some intense weeks right before this. We had a placement season going on, club elections going on, lots of case comms going on, and you had to part because as a founding batch, you need to win in the case comms. Hmm. So, or else the batch may will go bad. So, lots of case comms going on. We had to make our resume, prepare for interview, and the exams were also going on. And none of this was even close to something which I would have imagined. Like, पढ़ना तो दूर की बात है. I was not even imagining that this is how they could teach me. So Huh. I think the best experience for me at ISB was that when we joined, like for the first time, the dean, deputy dean, they were taking lectures for us. Now I'll tell you this actually happened with me. One, I had the feeling that I can do something great in life. If because the way they teach you for the first time you're seeing, you're reading different novels and then coming and discussing, and then every argument is broken down. Whatever you come prepared, it will be broken down. The communication and negotiations which you're having in the class, what we are learning, the new things, it's amazing. So you get the feel that okay, this is a correct place. And secondly, if I work hard, then they are giving me everything which is required to succeed in life and do something great. But given that I work hard and not only for exams, also for the learning mindset. So Right. that was something. Secondly, what I realized in this period was that professors are amazing. I don't know, coming from the undergrad college I did, or I don't know why, but out वहां here पे the तो क्या professors हाल were. होता है, कोई हेल्प ही नहीं करने को तैयार होता है, आई थिंक. तो या अंडरग्रेड And इज that's वेरी it. डिफरेंट. I'll tell you this happened with us because of the placement season. We were not able to give a lot of attention to our professors and the lectures which were going on. And this happened with every single person while we were preparing like one night before the exam. इसका exam में पढ़ना तो होगा. And we all were having like shit. We missed this. Like we had to do the pre-read. We had to go back and like we will request the professor for another lecture on this because we वाह. want this. This feeling is very insane when you get the feeling that okay, this is applicable. When you're studying operations, when you're studying corporate finance, the professors they teach you in a manner that this is required in life and you'll enjoy it. I've got engineer friends, I've got doctors, lawyers, and they all come to me like, "Ki, this is insane shit what you guys did for the last 5 years." And I'm like, no, this is different, that was different. And this is actually good. Along with that, ISB, like specifically while because it's a 2 year course, it gives you a lot of opportunities which are not there in the PGP also because 2 years is required when you have no work experience or 0 to 2 years of work experience. You need to give little more time. And there are very crazy programs which we have here, like experiential learning program where you work on a live project. You go, the ISB makes a team and makes you work on a live project with some corporate. And then there are pivot programs where you work on a startup. So it's सुपर. as real as it can be. And then they make you have your own startup. They'll give you a stipend and all also if you have your own startup and it gets registered in D Labs.
Then we are having collabs with, there's another course at ISB known as IVI. So that's for startups. So what we do is that we give them as like we work for them. They have the startups and you get the Oh, okay, founders okay, office got it. experience while being in ISB. So And they're trying like, to emulate some of the other B schools that have come up recently, probably just to it did not happen probably 3 4 or maybe in while it is happening so much. no, no, we started this. So this Oh, IVI thing was started by us. Like it okay, was started by my club, Entrepreneurship Club. We did it. That we'll collab with you. They give us some money also, and we work for them. And we super. get an experience of being in a founder's office, doing everything from scratch, making distribution channels, marketing GTM strategies, or maybe product. So we have a good time. And because of 130, the batch is so small and it's so close that you can learn anything from anyone. So another thing which I like, because I had lectures on DTSE and all, I had no idea about it. But I've Mm, got lots of engineering friend. When it comes to something medical, we have got doctors, lawyers. So it's right. insane. Like the experience out here is insane. There's nothing which can be beaten. And if you work hard, again, the same thing. If you work hard, the professors, the day in the institution, they are doing everything which they can so that you become something out of it. So amazing to hear all this, Kritin. So amazing. I mean, it's a different world for me also, because that's not the world I go to every time. I mean, I go to business schools, but that is like for a day or an hour. But it is like superb to know, superb. Do keep in touch. Genuinely, 100%. I mean, it'll be so amazing to speak to you again. We have a paucity of time, so we obviously will have to break this right now. Thanks so Yes, much for yes. your time. It's been amazing to hear all this. And the way you prepared, and that preparation for the GMAT actually helps you in life, in work life, in B school. That is amazing to hear. That it's not a myopic view that you've taken कि हाँ बस एक score आ जाए, then I'll forget the exam. It permanently changes you. Permanently. मतलब वो 100%, thought sir. process ही आपका इतना अलग हो जाता है. Superb to hear, and so amazed to be hearing these stories. Thanks, Kritin, for your time, Thank you and so much, we'll sir. continue this conversation some other time. Bye bye 100%. for Thank you so now. much. Bye. Yeah. Thank you, sir. Bye, sir. Bye. Just 1 second. I'll ensure everything is on. So that was Kritin, as you can see. I know some people are not really लाइक कि क्या मैं किसी और की कहानी सुनूं, बट ये आप अगर नहीं सुनोगे तो आपको आइडिया भी नहीं होगा कि बी स्कूल जाने के बाद क्या होगा. You should actually hear such stories so that you know what happens. And it's pretty exciting. 1 year or 2 year is not the point. And every business school will have something very, very exciting to talk about like this. So let's move on. I think we were talking about a lot of other things. So let's continue. Very quickly, I'll give you an idea. बट प्लीज पहली बात ये कि यार किसी लेवल से भी किसी लेवल पे जाया जा सकता है 455 से. ही वाज इवन गेटिंग 735. एग्जाम में कुछ मैसअप हो गया होगा, मतलब देयर इज समबडी हु स्कोर्ड. सो आई वाज ओनली टॉकिंग अबाउट क्या 30 डेज में 30 इयर्स लाइफ के नहीं बदल सकते. लेट्स बिलीव कि हो सकता है, पहली बात तो. और ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे को ज्वाइन करो, वो सब तो बात ही नहीं है. ये बिलीफ नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाओगे यार. 30 डेज का 30 इयर्स में भी लोग कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं लाइफ में. ये तो बहुत छोटी सी बात है, कुछ नहीं कर पाते हैं बड़ा लाइफ में ऐसा. And we are talking about this that 2025 में we have these schools which we have talked about, and life can change. अब मैं ये दूसरी स्टोरी जो बहुत पुरानी थोड़ी स्टोरी है, I want to talk about. This girl had been struggling with the GMAT for 5 attempts. Okay, 5 attempts. She came to me in a very desperate situation. R3 के टाइम पे she came कि मेरे सारे फ्रेंड्स का ये हो गया वो हो गया, किसी का स्कोर आ गया, मेरा स्कोर नहीं आ रहा. I am only in the 600. This was the classic edition, by the way. Later, she finished her MBA at Wharton also. She went with 100% scholarship in R3. तो इसको देखते हैं थोड़ा सा. 4 years of intensive prep she had done. 4 years. Okay, 4 years. She had gone to 14 because she was very clear कि मुझे करना तो एक ही चीज है, मुझे या तो हार्वर्ड जाना है, वॉटन या स्टैनफोर्ड. HSW के अलावा कुछ नहीं. Every single thing she had done, every, and she says all this in the interview, 30,000 questions. And after 7 attempts, तब तो GMAT में the number of attempts used to be only this. In that year, क्योंकि एक साल में 5 attempts allowed होते हैं, तो उसका जो पिछला साल था, she had done 5 attempts. So she had to wait कि second round में अब नहीं कर सकते with this bad score. So I have to wait for the next month क्योंकि एक calendar year में you can't do more than that. And she had taken 7, 8 was the last attempt. Her scores were always in the 600s, or always means maximum. Only 27 days she prepared with us. 27 days. RC में 20% accuracy थी, CR में 30% accuracy.
Wharton R3 with full scholarship, okay, not this much कि हाँ हो गया। मैं इसके लिए दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको ये बिलीफ होना चाहिए, आप ज्वाइन करो या खुद से करो, कोई बात नहीं है, मेरे को आपके पैसे में वो नहीं कि मुझे वॉलेट दोगे तभी कुछ, वो रीजन से मैं सेशन नहीं कर रहा हूँ। यू वांट टू जॉइन, डेफिनेटली जॉइन। यू डोंट वांट टू जॉइन, यू से आई कैन बिकम दिस बीस्ट माई सेल्फ, प्लीज डू। शी कॉन्टेक्टेड मी ऑन 16th of February। R2 होता है जैन में, मतलब R3 के लिए तैयारी चल रही थी। एंड दिस इज वन फर्स्ट टाइम ऑल ऑफ दैट। देन जो भी उसने बताया बाद में जो भी, एंड 15th of March, यू माइट से ये तो 29 डेज है, ये मत भूलो कि फेब्रुवरी का मंथ ही 28 डेज का होता है, नॉट 30 डेज। शी रिपोर्टेड a 770 आफ्टर 27 days, not 29 days, एंड शी वेंट टू वॉटन विद स्कॉलरशिप। ये उसकी स्कोर रिपोर्ट है, सब कुछ, मतलब तो ये हो सकता है। एंड अभी शुरू में 40% स्कॉलरशिप मिला, देन वी टोल्ड हर हाउ टू नेगोशिएट, बिकॉज दैट्स व्हाट वी डू वेरी क्लियरली, कि नेगोशिएशन कैसे करना है। बट सोचो, राउंड 3 में स्कॉलरशिप मिलता है पहली बार, यही नहीं मानते थे लोग पहले। और ये तब जब राउंड 3 में स्कॉलरशिप नॉर्मली नहीं मिलता था, विच मीन्स व्हाट, योर स्कोर कैन डू एनीथिंग। एंड वी मेड हर negotiate this and make it 100%. Right now, she's even graduated. The same day when she got the score, she sent a video, etc., etc. All of that. तो ये तो चीज है यार। Hey, hi everyone. Not that we are playing. We know this story, so I'll skip all this कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। I mean, if ISB's experience could be this rich, imagine when 83 countries people are studying with you. How awesome this experience can be, just for the experience. जॉब तो मिलती होगी जब दुनिया का नंबर 1 बी स्कूल है तो। और ये सब आपने देखा हुआ है कि उसका बैकग्राउंड इतना एवरेज, बीबीए, मैथ नहीं आता, डर लगता है। दिस गाय सेइंग हिज मैथ वाज गुड, शी हैड टेरिबल मैथमेटिक्स, टेरिबल हुआ है ना, लेकिन आपके सामने कोई बीसीजी नहीं। सम पीपल से दैट नहीं, फैंग नहीं होगा, बिग 3 नहीं होगा, बिग 4 नहीं होगा, तो आप जा ही नहीं सकते। She had nothing. Please see this. No big 3, no big 4, no fang, but she cracked. And with scholarship, please also remember. So if you look at S, ये जो मैं मॉडल की बात करता हूँ, स्कोर, स्कूल, स्कॉलरशिप, एंड देन फाइनली सैलरी ऑल्सो एंड सक्सेस ऑल्सो। ये सैलरी तो हो गया इसका, लाइफ लॉन्ग सक्सेस क्यों नहीं होगा? जब सुंदर पिचाई यहां से ग्रेजुएट करके 13 इयर्स में गूगल का सीईओ बन सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता। Hey, Kritika. I'm not playing the video, etc. All that. She was working at 20,000 a month, 2.4 lakh. 2.61 crore will be the package right now. This is the transformation that is possible. मैं सब बात कर चुका हूं. I'm not. The only thing is, this guy in 13 years after Wharton became CEO of Google and Alphabet, both. Alphabet is the parent company, जिसमें YouTube भी आ जाएगा सब. This is the point. ये so my grades, बहुत सारे बात कर चुका हूँ. This guy went to INSEAD. If Europe is your dream, with this profile, Christ University BBA, 0 big 3, 0 big 4, 0 MBB, nothing, nothing. जनरली लोग बोलते हैं कि फैंग है बिग 3, बिग 4, तभी होता है। ये सब झूठ है, हमने बात की हुई है पहले, ज्वाइन करने के पहले आपने देखा होगा। ऑल दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज, इट इज डेफिनेटली डूएबल। हमारी प्रॉब्लम है ये जो हमारा माइंड का चैटर है ना, कि मुझसे नहीं होगा, मेरा इंप्रूव नहीं होगा, स्कोर आ भी गया तो क्या फायदा है, शुड आई इवन डू एन एमबीए, इज इट वर्थ इट, ये जो दिन भर ड्रामा चलता रहता है ना, अगर आप ये बंद कर दोगे। लोग कृतिन की बात सुन के लगता है कि ही इज अ वेरी फोकस्ड गाय, बात सुन के लगता है कि ही वाज ड्रिवन ऑन अ मिशन टू स्कोर। इसकी बात सुन के लगता है ना कि यार, ही इज नॉट जस्ट स्टडीइंग फॉर जीमैट, ही इज एंजॉयिंग, ही इज यूजिंग दिस इन रियल लाइफ। ऑल दैट इज द वे टू गो। एंड लुक एट दिस। और ये इमेज आपने 1000 बार देख ली होगी मेरी साइड से ही, मैं फिर से कह रहा हूं, ये बंद कर दो कि 2 घंटे आउट ऑफ 3 आवर्स वी जस्ट थिंक नेगेटिव। क्या फायदा, मुझे स्कॉलरशिप तो मिलेगी नहीं, क्या फायदा होगा, तो है ही नहीं, जाके भी क्या, एमबीए में स्कॉलरशिप भी मिल गई तो व्हाट इज द पॉइंट? सब लोग बोल रहे हैं चैट जीपीटी इज बेटर देन अ कंसल्ट। अब चैट जीपीटी अगर बेटर देन कंसल्टेंट होता तो कृतिका जैसी लड़की को 2025 में $3 लाख का प्लेसमेंट नहीं मिलता। ये चीज समझ, इतना सा।
all the you just look at the way he spoke, and not because now he's got into ISB, he's become overconfident. ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये करते हैं जब लोग, वो 2 घंटे जब पढ़ रहा होगा तो 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, और ये 10 बार सुन लो उससे कुछ नहीं होता। आई कैन टेल यू दिस एवरी मॉर्निंग, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इफ यू डोंट चेंज योर सेल्फ। सो वंस अगेन दिस एज ओल्ड मिजरी कि नहीं 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 होगा नहीं होगा नहीं होगा, ठीक है फिर वैसे ही रहो। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दिस इन मेनी वेबिनार्स, सो आई एम नॉट रियली गोइंग। और बहुत फर्क तो है यार। 685 कितने दिन में, 21 डेज में M7 एडमिट भी हो गया एक बंदे। 3 साल 3 वीक्स versus 3 years, there is a huge difference. There's some reality check we need to get. And if you don't believe, once again, 21 days of preparation, 4 days of mock, that's it. 21, 22 days, 685 got into Kellogg. It's crazy, it can happen. The point is we got to believe कि हो सकता है कुछ, और वो यार बिलीव नहीं कि 1 घंटे के लिए मोटिवेट हो गए बढ़िया, उसके बाद फिर नहीं किया। 3-3 साल से लोग कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। कुछ लोगों ने 3 महीने पहले भी ज्वाइन किया होगा, दे ऑल्सो नॉट डूइंग। स्लैक क्यों करते हो आप? अपने आप से क्वेश्चन पूछो। आई कांट टेक द ऑडियो बिकॉज देन इट विल एक्सप्लोड। व्हाई डू वी स्लैक ऑफ? व्हाई कांट वी बी सो फोकस्ड? बस ये करना है अब लाइफ में भी, यही करना है, सिर्फ MBA की बात नहीं है। दिस इज ऑल। Kellogg is number 2 in the world. Please see this clearly, clearly. ये 5 चीजें करो, आप बदल जाएगी आपकी जिंदगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लाइफ बदल जाएगी। It has to be singular, ruthless obsession. Ruthless is not a negative term. Ruthless means nothing else matters. Nothing else matters. This is all, and you can do. मैं ये सब examples देने का फायदा नहीं है, because these have been examples of people who have been. Look at this guy, Bill Gates. इसकी बुक आती है द बिल गेट्स वे ऑफ डूइंग बिजनेस। ही सेज नेवर एवर टेक योर आई ऑफ द बॉल एज द 10th पॉइंट। दैट इज ओके, वी हैव अदर पॉइंट्स, बट मतलब 1 सेकंड के लिए भी आप स्लैक ऑफ नहीं कर सकते। यू मे बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, इवन देन यू कांट स्लैक ऑफ। ये एटीट्यूड नहीं है आपका। और मैं जानता हूं कि नहीं, ये सब झूठ बोलते रहते हैं अपने आप से। आई एम फोकस्ड, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कंसिस्टेंट। इट्स एब्सोल्यूट लाई, नहीं है वो चीज। I mean, look at this guy. He was 82 years of age when this book was written, and his interview says ambition never dies daily. Or these people are billionaires, not like millionaires or something. And so on. I mean, I could have gone on, but please see, अगर ये आपका एटीट्यूड नहीं है तो आप सीईओ मटेरियल नहीं हो। आप सीईओ क्या, आप आईएसबी मटेरियल ही नहीं हो। फॉरगेट सीईओ, you are not there, you're just not there, and that's why this, I'll just go past this because इसमें बहुत कुछ हो सकता था। I have always believed कि लाइफ में कुछ अगर सब्ट्रैक्ट नहीं किया तो कुछ नहीं। सब्ट्रैक्ट मतलब अगर 20 चीजें कर रहे हो तो 19 उसमें से ड्रॉप कर दो, बस। और ये मैंने बताया है, क्योंकि मैं बात करता हूँ कि हम न्यूज देखते टाइम ही इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि मेरा तो जन्म ही ताली बजाने के लिए हुआ है कि हाँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी वॉच स्पोर्ट्स। हम क्लैप करते हैं, हम पैसा देते हैं, हम अपना टाइम देते हैं। यू माइट से मैम हम तो घर में फ्री में देखते हैं, पैसा वो बना लेता है हॉटस्टार आपके देखने से। आप 900 रुपीज ईयर का सब्सक्रिप्शन लोगे, फिर भी पैसा बना लेते हैं वो लोग, उनको बनाना बाय एड्स। बट वी आर डूइंग मूवीज, व्हाट डू वी डू? वी क्लैप, वी गिव अवर टाइम, वी एनीवे गिव अवर मनी। पॉलिटिशियंस को, somebody might say no, ट्रम्प को क्यों सुनते हो रोज रोज, फिर अगर नहीं है तो stop listening to him, absolutely stop listening, but नहीं। the same thing, we just do this, clap, time, attention। music concerts, people take a picture कि मैं कोल्ड प्ले गया था। ये क्या पिक्चर है? पिक्चर होना चाहिए कि मैं कोल्ड प्ले के स्टेज पे था। you be on the stage, then be proud if you are a fan। आप शाहरुख खान के साथ पिक्चर पोस्ट कर रहे हो तो ये ध्यान रखो कि शाहरुख खान सेलिब्रिटी आप नहीं हो। ये फैंडम बंद करो सबसे पहले तो। लव बीइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टेज ऑलवेज, दैट्स व्हाट लाइफ इज। कॉमेडी शोज, जाकिर खान ने ये बड़ा शो कर दिया, अरे पर वो जाकिर खान का गेन है, आपका क्या गेन है? आपका लॉस है। क्लैप, टाइम, अटेंशन एंड मनी। दिस आई हैव रिटन द वर्ड न्यूज इन दिस हाईलाइट बिकॉज मेनी पीपल डोंट थिंक न्यूज से कुछ होता है। Just 10 seconds here, please read all of this। क्या इसके ऊपर 15 दिन वेस्ट करने की जरूरत थी? आप बोलोगे अरे इंडिया पे अटैक हो गया, पाकिस्तान में।
इससे आपका क्या फायदा हुआ वो टाइम देके? कुड यू हैव शट योरसेल्फ ऑफ? आई एम बीइंग वेरी वेरी, मे बी यू विल से कि ये तो क्रूअल्टी टाइप की बात हो गई कि कंट्री पे अटैक और टाइम वेस्ट हुआ क्या? एंड रिजल्ट इज यू वेस्टेड टाइम। आप ना तो उसको चेंज कर पाए, ना डेथ्स को रोक सकते हो, ना उनकी फैमिलीज को डोनेशन दे सकते हो, ना उनकी हेल्प कर सकते हो कश्मीर जाके, कुछ भी नहीं कर सकते। तो जिस चीज में आप कर ही नहीं सकते उसमें टाइम क्यों देना? इसमें टाइम जरूर क्या होगा आपका। एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश हो गया अहमदाबाद में, पागलों की तरह लोग बस उसी में लगे हुए हैं। कोल्ड प्ले आया था इंडिया में, बॉम्बे अहमदाबाद, यू कैन सी दिस कंट्रोवर्सी समय रहना रणवीर वाली, जो पागलों जैसा। वॉट एवर, विराट कोहली व्हेन ही वन आईपीएल पीपल वेंट, जस्ट फॉरगेट इट, विराट कोहली ने जीता है, आपने कुछ नहीं उखाड़ा। ये बात है। और इसमें से कोई भी चीज बोल दो कि मैंने एक भी नहीं की, 20 केस। माय क्वेश्चन इज, डिड यू स्पेंड टाइम ऑन इवन वन ऑफ दीज? प्लीज आंसर यस नो टू योरसेल्फ। क्या आपने इसमें से एक चीज पर भी टाइम, मैं प्राउडली बोल सकता हूं मैंने इसमें से एक चीज में भी टाइम नहीं दिया, एक भी चीज पे। और ये डिफरेंस है। अगर एक भी चीज, 1 आउट ऑफ 20 ऑल्सो इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। और हम क्या कर सकते थे? पूरे टाइम पढ़ाई कर सकते थे, तो अभी तक स्कोर आ जाता हमारा, आ जाता ना स्कोर। आप अप्लाई करवाते राउंड वन में, राउंड टू में, बिल्कुल। पर ये नहीं, ये कोई कितना भी मुझसे डिबेट करे कि नहीं नहीं मैं कोई मशीन हूं क्या, मुझे एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए, फिर ये मत करो ना। ये 1-2 मंथ्स मांग रहा हूं मैं आपसे, मैक्सिमम 60 डेज लगेंगे एग्जाम देने में आपको। एक्चुअली 40-45 डेज ही, बट लेट्स, what did he say? When you write a mock, just go in depth. When you analyze a mock, spend more time analyzing. क्या ये ट्रेट है उस पर्सन के कि दिन भर बस बकवास करते रहो? नहीं होता यार ऐसे। होता तो फिर क्या? मैं आपको बहुत ऑनेस्ट बता रहा हूं, अगर इसमें से एक 1 आउट ऑफ 20 ऑल्सो यू हैव गिवन योर टाइम, यू हैव ओनली वेस्टेड दैट टाइम, दैट टाइम वोंट गिव यू जीमैट स्कोर। इससे जीमैट स्कोर आएगा क्या बताइए मुझे? इससे मैकिंजी का इंटरव्यू क्लियर होगा क्या? इससे आईएसबी की एप्लीकेशन बने? क्यों उन चीजों पे हम काम नहीं कर सकते जो वैल्यूएबल है हमारे लिए? एंड आई वांट टू आस्क, मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, प्लीज टेल मी, क्या ये हमारी रियलिटी है या आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ? प्लीज, मैंने चैट ओपन किया है, एवरीबडी प्लीज आंसर, आई वांट दिस। क्या ये हमारी रियलिटी है कि हमने एक वन आउट, प्लीज लिसन टू, इवन ऑन 1 आउट ऑफ 20 थिंग्स, इफ यू पेड योर टाइम एंड अटेंशन, यू जेन्युइनली हैव समथिंग, प्लीज बताएं यार प्लीज। कोई छूटने की बात नहीं है इसमें, कोई बुरा मानने की बात नहीं है, बताइए प्लीज। एंड डू यू थिंक दिस विल गिव यू स्कोर? इनसे स्कोर आएगा क्या? नहीं, जियो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की भी जरूरत नहीं है जब आप तैयारी कर रहे हो। इससे स्कोर आएगा क्या ये सब करके? ये बताइए मुझे कि मैकिंजी का इंटरव्यू क्लियर कर लिया मैंने, मेरे को भी $3 लाख की जॉब मिल गई, ये क्योंकि मैंने ये किया था लाइफ लॉन्ग, इससे कुछ नहीं आएगा। जिसको ये बात समझ आ जाएगी ना वो बहुत कुछ कर जाएगा लाइफ में, नहीं तो फिर यही चलता रहेगा, हमारी लाइफ यही चलता रहेगा। आई मीन सो मेनी पीपल आर सेइंग द सेम थिंग्स। We will take up anything else you want, but please see this is where we falter. और ये सब बातें करने की बार बार जरूरत नहीं है आपको। एक चीज पे 30, मैं क्या मांग रहा हूं आपसे यार, 30-40 डेज मांग रहा हूँ। और आपसे मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, मेरा क्या फायदा होगा? आपका कोई 20 स्कूल में सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरे तो होंगे ही ना, हर साल 500-1000 सिलेक्शन हो ही जाते हैं। मेरा तो बिजनेस चलता रहेगा, मेरा तो काम चलता रहेगा। इट इज अबाउट यू, इट इज नॉट अबाउट मी। Genuinely, and you will have to fight to the finish, because when you start prepping, it is never linear. This is the return we expect. You'll always have this valley of disappointment. यहाँ पे अगर आपने क्विट कर दिया तो फिर कुछ नहीं होगा, ये क्विटिंग जोन नहीं है बस। और ये बार बार सुन के फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कुछ भी है। सी दिस गाय, इसके YouTube चैनल, इसके YouTube वीडियो पे somebody from one of our students commented, मतलब इसने वीडियो में बोला होगा 18 to 19 hours per day he was studying. आई एम नॉट सेइंग वन कैन वन शुड, वो मेरा बात नहीं, पर 745 स्कोर आया है ना उसके लिए। क्या वो मैथ बैकग्राउंड से? नहीं। क्या इंजीनियर है? नहीं। क्या उसका मैथ बहुत स्ट्रांग था? उसने सब बोला है ही वॉज वेरी 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 एवरेज।
I mean, this is the point I'm trying to make. How is someone able to study this much and we can't focus कि 2 घंटे के बाद ब्रेक चाहिए, 1 घंटे के बाद ब्रेक? Doesn't work like that. एंड यू मे हेट ऑल दिस, आई मीन आपको लगेगा कि यार ये सब क्या है, मैं ह्यूमन हूँ, मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे कॉफी पीना है, मुझे बाहर जाना है, इंस्टाग्राम खोलना है, मुझे करो, फिर यही करो ना लाइफ में। इन लोगों का कुछ हो जाएगा, हम लोगों का फिर नहीं होगा कुछ। बहुत सिंपल बात। सो डोंट रियली टेल मी दैट नो नो, we have heard all these stories, so I don't want to go कि bad at quant. This guy 480 435 स्कोर था इसका, he's gone to 785, 435 से 785। I don't want to really dwell so much, but look at this. Scored 715 in the first attempt. Who is this person who was too scared to start on quant? ये आपने देखा हुआ है सब कुछ, लेकिन ये चीज हम इम्बाइब नहीं करते। 2 दिन मोटिवेट होते हैं, तीसरे दिन फिर क्वांट की चार, हाँ एक टॉपिक कर रहे हैं एलिगेशन का, नहीं 2 सवाल सॉल्व हुआ, आई क्विट इट, आई विल नॉट बी एबल टू डू पीएनसी प्रोबेबिलिटी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बिकॉज आई जस्ट वांट कि हर क्वेश्चन स्मूथली सही हो जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। That learning phase, that valley of disappointment, we don't count. So somebody can get a 715, which means ISB 100 percentile, 100% scholarship, या what, 100% scholarship मिल सकता है for someone in the first attempt, and too scared to start even with quant. So if you feel कि नहीं हो सकता, तो फिर तो यार बहुत कुछ है, मतलब उसको हमेशा से ही है कि आरसी में 100% किसी का स्कोर आ गया। यू हर्ड ऑल, यू सीन ऑल दिस। मैं तो हमेशा इसका एग्जांपल देता हूँ, मेरा सबसे फेवरेट स्टूडेंट यही होगा आज तक का। उसका रीजन है, उसका रीजन है बहुत सिंपल। ये किस बैकग्राउंड से आया है उसको देखो। बिहार इज, लेट मी डिस्क्राइब, आई नो सम पीपल विल लीव कि हाँ ये तो फालतू का मोटिवेशन है, यही गलती कर। बिहार में 2,000 रुपये महीना भी मुश्किल से कमाने वाला लड़का, 33 ईयर्स की एज तक कोई जॉब नहीं लगी, सुबह खेत में पानी देने जाता था, सुबह 3 से 5 बजे तक, दैट वाज द ओनली टाइम देयर वाज इलेक्ट्रिसिटी। ही यूज्ड टू गो टू रेलवे स्टेशन, क्योंकि कोई और वाईफाई था ही नहीं रेलवे स्टेशन। ही डाउनलोडेड द कोर्स, ही यूज्ड टू कम टू जूम फ्रॉम रेलवे स्टेशन टू अटेंड लाइव क्लासेस। दैट गाय, जिसको इंग्लिश का एक शब्द नहीं आता, हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ, और उसके बाद वो लाया 770 एक बार, फिर फोकस एडिशन में 775। दोनों एरियाज में ही है 100 परसेंटाइल। क्वांट में भी तो ऑब्वियस प्रॉब्लम होगा ना जब इसमें है, तो ये चीज। एंड आई एम श्योर आई डोंट वांट टू डू ऑल दिस फॉर यू राइट नाउ, ऑल दिस। मैं प्योरली हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ। एंड आई कुड हैव गॉन ऑन, दैट्स नॉट द पॉइंट। मतलब मैं आपको ये क्या बता रहा हूँ बार बार, ये एक ही चीज, कोई फायदा नहीं। इट्स जस्ट दैट व्हेन वी स्पोक टू मुकुल, she is one of the most promising stories of the intensive batch ever, and what he says is I was weak at all sections, बट आप उसकी स्टोरी, मैं अगर कभी मैं डिप्रेस होता हूँ ना, तो मैं मुकुल का वीडियो खुद देख लेता हूँ। मेरा स्टूडेंट था बट मैं देख लेता हूँ। मेरी लाइफ का पूरा डिप्रेशन चला जाता है 1 मिनट के अंदर। 15-20 मिनट का वीडियो है, थोड़ी स्पीड बढ़ा के देखा, आई व्हेन इफ आई एम डिप्रेस्ड इन लाइफ, दिस इज द वीडियो आई वांट टू वॉच। इट्स क्रेजी, मतलब सोच ही नहीं सकते, इतना क्रेजी है। बट वही है यार, डिफरेंस कुछ नहीं है। और ISB R3 आप बिल्कुल कर सकते हो। मैं फटाफट बताता हूँ बैच किसके लिए है, अगर आपको सुनना है। डिसिप्लिन हैज बीन अ प्रॉब्लम, कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन, क्लोजर, फोकस एंड डेली ग्राइंड, लास्ट मिनट पुश। इट इज बेसिक्स आर नॉट गोना बी टॉट, सो डोंट थिंक समबडी आस्क्ड मी इन द चैट कि मेरे क्वांट के बेसिक्स ही नहीं हुए। नहीं, you join the regular batch in that case. So this is all the details will be given 10th November। time भी है, we have 2 weeks, you can start, 2 week का time दिया आपको। and this, okay, all this will give you the deck itself, you सब self explanatory। अदरवाइज एक चीज और है, अगर आपको स्लो करना है कि नहीं मैं इतना फास्ट नहीं, आई एम एट अ बेसिक्स लेवल, देन यू जॉइन द लाइव बैच फ्रॉम 8th of November। डोंट से कि अरे मेरे को तो 2027 में जाना है, नवंबर क्यों, आई विल जॉइन इन जैन। आप अपने आप से पूछो कि अगर आप नवंबर की बजाय जैन में ज्वाइन कर, ज्वाइन मतलब जो भी, स्टार्ट योर प्रेप, ज्वाइन यू मे हैव डन ऑलरेडी। इन 2 months में आर यू नर्चरिंग और हावर ड्रीम, और आर यू फ्रिटरिंग योर टाइम अवे? दिस इज द क्वेश्चन वी हैव टू आस्क अवरसेल्व्स। वी विल बी टीचिंग, एवरी क्लास विल बी DI, हर जितने भी क्लास होंगे उसमें DI जरूर होगा, वर्बल DI और क्वांट DI। हर क्लास में DI विल ऑटोमेटिकली बी कवर्ड, एंड बाकी डिटेल्स माय टीम विल गिव यू अगर आपको करना है।
R2 में बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, ISB R2 तो भूल ही जाओ. R3 definitely possible, and R2 of some schools that are late Jan, that is possible, or R3 of all schools is possible. So you can just say R3 all, R2 a few, and ISB R2 I'll rule out this. And सब मिल जाएगा scholarship. We have this. Yep. So final push के लिए, if you want to join, you join. If you don't want to join, then that's up to you clearly. But if your basics are still shaky, join this clearly. Nothing else. Some people have this कि यार cost, आप 40 लाख रुपीस ISB को देने को तैयार हो, 40,000, जो चीज आपको ISB का पूरा 40 लाख जीरो करा सकता है उसको तैयार नहीं होते हैं कहीं. हमारा ऑप्टिक्स ही गलत है, हमारा जो देखने का तरीका है चीजों को वही गलत है. ऐसी चीज जो आपका पूरा 40 लाख को जीरो कर देगी, स्कॉलरशिप मिल जाएगा तो उसका 40 लाख, 40 तो फिर फीस भी नहीं है. वी चार्ज लेस देन 1% ऑफ व्हाट ISB चार्जेस. फिर भी लोग डिनर पे जाके 15-20 हजार खर्च कर देंगे, बहुत बड़ा डिनर हो, पर ये नहीं करेंगे. और ये मुझे इससे अगर फर्क पड़ता है तो डोंट थिंक. आई एम मेकिंग इट कॉस्ट वर्सेस इन्वेस्टमेंट. यू आर इन्वेस्टिंग इन योर ओन फ्यूचर बाय ज्वाइनिंग. बहुत क्लियरली बता, क्योंकि अगर 100% स्कॉलरशिप मिल गई, और क्यों नहीं, आई मीन यू माइट से कि सबको नहीं मिलेगी, अग्रीड, 100 people listening in will not get a scholarship, not possible, but who says you particularly will not get it? आपको स्कॉलरशिप मिलेगी ही नहीं, ये तो कोई भी सोच सकता है. दिस आरती could have also thought about this. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं हमेशा बोलता हूँ कि ISB अगर 1% अपनी फीस बढ़ा दे तो इट विल बी 40,000 to 45,000 हाइक. ये देने को हम तैयार हैं, लेकिन हमें ये प्रॉब्लम. अनदर थिंग, अगर GST का रेट बढ़ जाए 1% से, सिंपल, बहुत छोटी सी चीज, 18 का 19% देना पड़े तो क्या हम बोलेंगे नहीं ISB बहुत महंगा हो गया, अब मैं नहीं जाऊंगा. लुक एट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव. आपकी ऑप्टिक्स ही गलत है, ध्यान रखिए. एंड दिस इज व्हाट. एंड प्लीज कॉन्टैक्ट माई टीममेट्स इफ यू वांट. वी हैव सीन ऑल दी स्टोरीज. ये एबिल का स्टोरी तो मतलब वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेशनल आई फाइंड पर्सनली. मुझे अगर कुछ बुरा लगता है, कुछ लाइफ से कोई कंप्लेन होती है, डिप्रेशन होता है कभी, मैं 2-4 अपने स्टूडेंट्स की स्टोरीज खुद देख लेता हूँ. मुझे लगता है इससे बेहतर तो मोटिवेशन मुझे भी नहीं मिल सकता. दे हैव अचीव्ड समथिंग. सो डेफिनेटली पॉसिबल. we are going to skip all this because 100% to Harvard भी हो चुका है स्कॉलरशिप सब लोगों का. एवरीथिंग इज डूएबल. एंड दिस गर्ल मुस्कान, दो कॉलेजेस से आपका फाइनल एडमिशन ऑफर आ जाए और आपको चूज करना पड़े, एंड फाइनली यू एंड अप ड्रॉपिंग हार्वर्ड. दैट इज द पोजीशन आई वांट यू टू बी इन. इफ इट्स अ रॉन्ग ड्रीम फॉर यू, बताइए आप कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को ऐसी चॉइस मिले लाइफ में. And then she ended up choosing Stanford. That is what her decision was. But हर स्टूडेंट को ये चॉइस मिले, ये मेरा ड्रीम है. आप चाहे नहीं चाहे वो आपकी मर्जी है. Anyway, will not play any of these things you've seen. सब हो सकता है. Just ensure that you talk to my teammates, number one, and please make sure कि आपको नहीं करना है तो आप खुद से करो. 3 options. One is leave GMAT altogether. छोड़ ही दो कि यार ये जर्नी मेरे लिए नहीं. नंबर 2, आई डू इट माई सेल्फ. मेरे पास कोर्स है, मैं खुद कर लूंगा. परफेक्ट, वो भी बिल्कुल गलत नहीं है. आप नंबर 3, आई वांट टू जॉइन दिस बैच फॉर 5-6 वीक्स. आई वांट टू लॉक इन, एंड 40 डेज में आई वांट टू चेंज द नेक्स्ट 40 years ऑफ माई लाइफ. It is purely the same thing. As I've been saying, it is not about the money you will pay me. It is about the future you will secure with scholarship. भूलो मत कि 100% scholarship मिल सकती है. Please talk to these people. You may have been in touch already, and that is from my side. Just 1 second. There are some questions people have written. Okay, just 1 second. So I will be able to take your questions once you're part of the classes. बहुत डिटेल में we'll take your questions. As of now, this is my message. 3 options. Quit altogether. फिर tinge of guilt भी नहीं होना चाहिए कि मैंने छोड़ दिया. Confident decision कि MBA मेरे को करना ही नहीं, कुछ और कर. Number 1. Number 2, I'll do it myself. I have the course, I have the content, and that alone has helped people get into ISB to Harvard.
किसी ने जरूरी नहीं है कि इंटेंसिव बैच या ये जो ISB R3 ये ज्वाइन किया ही होगा. The third is I know my nature. I am inconsistent. I get off track again and again. If somebody can pull me from that despair for the next 5 to 6 weeks and I can get triumphant on the other side, I am absolutely ready for it. ये 3 ऑप्शन है, या तो छोड़ ही दो, मैंने बोला बार बार, तो या फिर खुद से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. और तीसरा, आप यहाँ पे आओ लेकिन फिर सिंसियर भी रहो. पैसे भी दे दिए, फिर कुछ किया नहीं, फिर दूसरी क्लास से मोटिवेशन डाउन हो गया, फिर आई डोंट वांट पीपल लाइक दैट. यार आप मत दो, पैसे भी मत दो, मत आओ यार. आपको सिंसियरिटी नहीं है, लास्ट मोमेंट में बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल. एंड इट इज डूएबल. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज मैंने किसी को 30 दिन पढ़ा के ISB भेजा है सिर्फ. किसी को 21 डेज पढ़ा के केलॉग भेजा जो हार्वर्ड से ज्यादा रेटेड. ये मेरे को पता है कि मेरे कोर्स में वो है, बट दे वर सेल्फ मोटिवेटेड. में you need that, you really take that help. I'm charging you less than 1% of what you will pay ISB. Forget what you will pay Harvard, Wharton. उनको तो 2 करोड़ देना पड़ता है. 2 करोड़ तो फीस है. We are not saying 2 crore ka ki, yeah, you have to pay us 2 lakhs. No, not at all. So please put things in perspective, look at the optics and take a decision. All my best wishes are with you completely, whether you go for one option or the other. आप सेल्फ स्टडी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 100% ये होना चाहिए कि यार सेल्फ स्टडी भी कोई दिक्कत. बट बी लाइक दीज पीपल. कृतिन को देखो यार, ही इज अ यंग स्टूडेंट, अभी 1-2 साल उसका वर्क होगा मुश्किल से, एक साल. हाउ फोकस्ड, हाउ क्लियर इन हिज माइंड ही इज, एंड ही वाज सो ड्रिवन. बात करके लगता है कि ही इज अ विनर. He wanted to be a winner and he is a winner. अभी 1.5 साल ISB पढ़ना बाकी है, तो भी he will be a winner. It seems very clear that he's taking very different kind of interest even at a B school. He's thinking about life. He's thinking about conquering life itself. That's the attitude we need. All right. I will not take any questions in this. If you have questions, connect with either Richa or Priyansha or Janvi. They will take all your questions. क्योंकि इसमें जो भी है वो सब already document में दिया हुआ है सब कुछ. This deck also I'll share with you. All right. So we'll keep it short. Thank you for your time. Believe me, I have been able to change thousands of lives within a very short span of time. आपकी भी बदल सकती है. गारंटी तो किसी चीज की नहीं. गारंटी तो इसकी भी नहीं कि कल आप में या मुझसे में से कोई जिंदा भी रहेगा. ये गारंटी भी नहीं. तो गारंटीज पे तो बकवास है कि हाँ सर गिव मी अ स्कोर गारंटी. नो, देयर इज नो गारंटी. यू डोंट पुट इन द वर्क. मनी इज नॉट एट ऑल अ गारंटी टू सिक्योर योर फ्यूचर. कि मैंने 5 लाख रुपए इसको दे दिए है तो मेरा हो जाएगा, नहीं होता ऐसे. आपको करना पड़ेगा. एंड व्हाई विल समवन एल्स टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ योर फ्यूचर? इफ यू डोंट डू एनीथिंग, ट्रस्ट मी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, नोबडी इज बॉदर्ड. व्हाई शुड आई बी बॉदर्ड? आप खुद ही बॉदर्ड नहीं हो तो व्हाई शुड आई बी? प्लीज बी कंसिस्टेंट लाइक दिस. क्रैक दिस थिंग आउट एंड आउट. 30-40 डेज की बात है. R3 में तो क्रैक हो ही जाएगा, ये मेरी गारंटी, अगर आप लगे रहो दोनों तरह से. यू मे नॉट ज्वाइन, यू मे ज्वाइन, इज टोटली योर डिसीजन. सी यू गाइस देन. बाय बाय.